particularly devoted on Maharshi Valmiki's Ramayana. And we all know that in Valmiki Ramayana, there is much detailed explanation of various aspects of Rama's character. And here we have our first speaker who are going to speak on this particular topic, which is very important, and we get lot of insights on the flora, fauna, geographical description which is available in Valmiki Ramayana, and they are four authors: Supriya Ashish ji, Nilesh Joshi ji, Onkar Joshi ji, and uh, Vedic, Vedika uh, Mandala ji, on geographical study of places described in Valmiki Ramayana. So, in fact, I also refer Valmiki Ramayana for getting a lot of interesting geographical insights which are mentioned in this uh, important text. So, I request Onkar Joshi ji, please go ahead with your. You have 10 minutes time for your presentation. So, I invite you, Onkar ji, please come. Yes, sir. Thank you, sir. Uh, my, I'm audible, sir? Yes, yes, you are very much audible. Okay, sir. Thank you. So my topic is geographical study of places described in Valmiki Ramayana, critical analysis from Balakanda. Scope and objectives. This paper presents a critical examination of the principal geographical reference within the Valmiki Ramayana with a primary focus on the Balakanda and an extended analysis of significant locations from the Aranyakanda and Kishkindakanda. It moves beyond mere cataloging to interrogate the interplay between literary topography, historical memory, and ritual geography. The objective is to synthesize philological evidence, archaeological data, On- geomorphological studies, and Onkar ji, your screen is still not visible to me. I don't know whether it is available to others. oh, just sir, may I Yeah, try? it is still coming that you have started sharing the screen, but I am unable to see it. Okay, sir, I Can will you try. can you stop sharing and reshare? Yes. Yes, thank you. And if you Thanks can a make lot, it sir. full screen, it will be much better. Yes, sir. Thanks a lot. Is it okay, sir? It is not yet full screen, Oh, but you yeah. can go ahead, please. Otherwise, it will take time. Try F5. It is depending on whether they have shared the screen or they have already shared the application. So I'm sharing, but it is not visible there. I think so. No, no, your screen is visible, but it's still not in the presentation mode. It's only on the Yes. view mode. Okay, sir. Okay, sir. I will try, sir. Hmm. Introduction: the epic as a geographical uh, palimpsest. Valmiki's Ramayana is a palimpsest where mythic narrative, Kshatriya genealogy, and sacred geography are inseparably fused. The Balakanda establishes the epic's primary political and ritual centers, grounding the narrative in the known world of Gangetic Plain. However, as Rama's journey progresses into exile, the geography shifts into the other space of the forest, like Aranya, a realm of aesthetics, demons, and moral trials. This transition from the ordered kingdom of Kosala to the chaotic Dandaka forest is not merely a plot device, but a geographical articulation of a central theme. The confrontation between dharma and adharma, identifying these places, therefore, is not a simple exercise in cartography but an archaeological dig into layers of cultural memory where historical
toponyms are overlaid with ritual significance and poetic imagination. Theoretical and methodological framework. First one is textual philology and critical edition. The primary source is the critical edition of the Valmiki Ramayana, which helps mitigate recensional variations that often reflect localizing tendencies. All Sanskrit quotations are cross-referenced with this edition. Historical geography and archaeology. This involves Omkarji, correlating. sorry again. Are you moving the slides? Yes, yes, I am moving, sir. But we are still on the title slide. Oh, sir, just. Mm, Mhm. Mhm. sir, I don't know what is there. Some Yeah, problem is going on. yeah, we are still on the second slide Yes, now. sir. Huh. Historical geography and archaeology that involves correlating textual descriptions with material culture evidence from archaeological sites. Geomorphology and paleohydrology, the study of ancient river courses, is crucial for verifying descriptions of riverine settings such as the Sherayu near Ayodhya or the Godavari near Panchavati. Next one is pilgrimage, like Tirtha tradition and sacred geography. The living tradition of pilgrimage provides a continuous, though often transforming, link to epic geography. Sites are analyzed as memory pluses that perpetuate and sometimes invent geographical associations. Last one is spatial visualization. The use of maps and diagrams is employed to synthesize complex geographical relationships, plot narrative trajectories, and categorize the types of evidence supporting site identifications. So, first one is mm, Ayodhya and the Sharayu, the archetypal capital. The identification of Ayodhya is the most stable in the entire epic. The text consistently pairs the city with the Sharayu river. Sa Sharayu Ayodhya Adhishrita. The Sharayu supported Ayodhya. Valmiki Ramayana. This is not a casual detail but a fundamental element of its identity, echoing the archetype of the sacred city on a holy river. Archaeological corroborations, excavations at modern Ayodhya reveal settlement continuity from the northern black polished ware period 6th century BC onwards, aligning with the traditional chronology of the epic. While no inscriptions explicitly naming the epic Ayodhya has been found from this early period, the occupational sequence supports its status as an important early historic city. Geomorphological evidence, studies of the Sherry's paleochannels confirm its proximity to the ancient settlement mound, validating the textual description of a riverine urban center. Pilgrimage continuity, the network of ghatas, riverfront stays, and temples, particularly contested Rama Janmabhoomi site, demonstrates an unbroken tradition of Ayodhya as a tirtha intimately linked to Rama's narrative, a process that identified in the medieval period. Second one is coastal, the political heartland.
Balakand present Kosala as a powerful settled kingdom like Janapada, ruled by the Ikshwaku density. The epic describes it as prosperous and extensive, with Ayodhya as its nerve center. Historical sources distinguish between Uttara Kosala, northern Kosala, with its capital at Shravasti, and the Dakshina Kosala. For the south, the Ramayana's Ayodhya likely corresponds to the core of Uttara Kosala, Law 45 to 47. The text geography reflects a memory of pre-Buddhist Gangetic kingdom that was a major political and cultural force. Like Videha Mathava, the kingdom of Videha, with its capital Mithila, is the setting for Sita's Swayamvara. The identification here is a more complex and contested than from Ayodhya. Textual and historical context. Textual and historical context, Vedic and post-Vedic literature places the Videha Janapada in the eastern Gangetic plain, north of the Gangas, in present-day North Bihar and southeastern Nepal. The Shatabada Brahman narrates the mythic eastward expansion of the fire god Agni and the sage Videga Mathava, who established this kingdom. Modern claims Janakapura, Nepal. This is the predominant pilgrimage center, home to the magnificent Janaki Mandir. Its claim is bolstered by a strong local Mithila cultural tradition and its localization within the historical Mithila region. However, extensive archaeological remains of an early historical urban center comparable to Ayodhya are yet to be conclusively identified here. Stimerehi is traditionally claimed as Sita's birthplace. Oh, Sita, Omkarji, your okay. slides have disappeared and we don't have much time left. You have to conclude in 2 minutes also. Yes, sir. Sure, sir. Sure, sir. Sorry once again. I don't know what happened. There are five places like Ayodhya, Kosala. In Kosala, in Nama Videha Mithila, a contested Janaka homeland. Next one is Chitrakuta, and there is a Atri Anasuya Ashrama. So then the Deccan frontier, the Ashrama network and Rakshasas territory like Sutikshana Ashrama, Agastya Ashrama, Panchavati, Janasthanam, the Kishkinda realm and southern geography in there, Rishamukh Parvata, Kishkinda and Swayam Prabha Guha. Other significant toponyms like in Gokarna, a primer Shaiva Tirtha on Karnataka coast, its inclusion in the Ramayana reflects the epic awareness of pan-Indian pilgrimage networks, even if it is not a primary setting. Pushkaram, located in Rajasthan, it is one of the most ancient tirthas. Its mention situates the epic geographical knowledge within a broader subcontinental sacred geography. Vajrasthanam, a less common name, possibly referring to a specific rocky or formidable location within the Vindhyas. Its identification remains speculative. Synthesis and conclusion. The geography of Valmiki Ramayana is not a single coherent map, uh, but a stratified cultural construct. The Balakanda presents a Gangetic world with the strong historical foundations where Ayodhya and Mithila, though not without contestation, are rooted in identifiable Janapada geography. As the narrative moves into exile, the geography becomes a tool for myth making and Omkarji, cultural we appropriation. have to conclude now, please. Yes, sir. Just half minute. The journey from Chitrakuta to Panchavati traces a path of Brahmanical snatification of the Vindhyan and Deccan landscapes, transforming wilderness
into a sacred landscape of ashramas. The Kishkinda with the remarkably specific identification in the Hampi region may reflect a latter stratum of the epic that incorporatable knowledge of the Deccan southern periphery. Ultimately, the pursuit of the epic geography is a pursuit of its meaning, the movement from the ordered horizontal space of Kosal to the vertical chaotic and demonic space of Lanka is the spatial expression of Rama's cosmic mission to map the Ramayana is to map the imagination of ancient India. So thanks a lot, sir. And धन्यवाद sorry for my presentation. ओमकार जी. Thank you very much for bringing this geographical perspective of Valmiki Ramayana. I request my other speakers as well as those who are attending this session that please, if they can write their correct name in the list of participants, so that if any of the speaker who originally was not here, if they join late, I can call them if they are available. And at the same time, I request all the presenters that try to conclude their talk in 8 minutes around, so that we can have some time for any question if anybody wants to have. Otherwise, if we take entire 10 minutes for our talk, we may not be able to invite any question. So I request, I hope all our speakers will take care of these aspects. So I now request, without taking any further delay, Kuber Shrad Vasudev ji, Swami ji is going to present a talk on महाकाव्य संकल्पना और वाल्मीकि रामायण का एक शोधपरक अध्ययन. जय जय रघुवीर समर्थ. मेरे पूर्व संचित पुण्य एवं श्री गुरु कृपा से मुझे विश्वविख्यात हस्तलेखन शोध संस्था धुले स्थित श्री समर्थ वाग्देवता मंदिर में 50 वर्षों तक त्याने एकदा विचारायला पाहिजे सगळं. समर्थ साहित्य का सानिध्य प्राप्त हुआ. क्या मुझे आप सब सुन सकते हैं मुझे? जी जी स्वामी जी, अच्छे से आवाज अभी आ रही है और आपका पीपीटी भी दिख रहा है. देखा है. अच्छे, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया. समर्थ हृदय शंकर श्री कृष्ण देव ने आजीवन संपूर्ण भारत के श्री समर्थ रामदास स्वामी जी के 1100 मठों में उपलब्ध हस्तलिखितों की खोज करके उनका एक सुव्यवस्थित एवं शास्त्रीय मानदंडों पर आधारित संग्रह तैयार किया, और यह समस्त संग्रह अभ्यासकों के लिए श्री समर्थ वाग्देवता मंदिर में सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से रखा गया है. इस शोध निबंध का अध्ययन इसलिए संभव हो सका क्योंकि यह विषय रामायण के चिंतन का संबंधित है. यह काल की सभी सीमाओं को अतिक्रमित करके संपूर्ण विश्व के मानव हृदय पर अपना आधिपत्य स्थापित करने वाले एक महाकाव्य का अध्ययन है. वैदिक काल से ही काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम का उत्कृष्ट समन्वय एक आदर्श के रूप में मान्य रहा है, और महाकाव्य में यह आदर्श विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है. संस्कृत साहित्य में महाकाव्य का स्थान अत्यंत ही उच्च और महत्वपूर्ण है. यह मानवीय अनुभूतियों, सामाजिक मूल्यों, ऐतिहासिक घटनाओं और दार्शनिक चिंतन के कलात्मक एवं शिल्पगत उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत करने वाली विधा है. सभी महाकाव्यों में मूल में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित गीत रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है. वाल्मीकि से पूर्व इस प्रकार की विशाल मार्मिक और शिल्प विधि से परिपूर्ण काव्य का उदाहरण उपलब्ध नहीं है. अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वाल्मीकि रामायण ने ही महाकाव्य विधा की नींव रखी और उसे एक ठोस स्वरूप प्रदान किया. यह लौकिक संस्कृत साहित्य की महाकाव्य रचना है. महर्षि वाल्मीकि की उच्च कोटि की प्रतिभा को ब्रह्मदेव के आशीर्वाद तथा नारद मुनि के प्राक कथन स्वरूप एक शोकांतिशा से उद्भूत
छंदोबद्ध रचना का श्लोकबद्ध आविष्कार वाल्मीकि रामायण है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही अनुष्टुप छंद में पहला शोकांतिक श्लोक फूटा। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक जनित श्लोक के छंदोबद्ध रचना को जन्म दिया और काव्य शास्त्र के लिए मानक स्थापित किया। यहीं से काव्य की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण को सार्वभौमिक रूप से प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किंतु एक शोधपरक प्रश्न यह उठता है क्यों कि अ, वास्तव में काव्य शास्त्रीय लक्षण में रामायण का काव्य सौंदर्य और उसकी संरचनात्मक जटिलता को पूर्णतः समेट पाते हैं। क्या महाकाव्य को केवल तकनीकी लक्षणों के तक सीमित करके देखना रामायण जैसे ग्रंथ की विशालता के साथ न्याय कर पाएगा? संस्कृत काव्यशास्त्र में वर्णित महाकाव्य के सैद्धांतिक लक्षणों का संकलन एवं विवेचन करना आवश्यक होता है। वाल्मीकि रामायण का विश्लेषण करते हुए यह सिद्ध करना कि यह ग्रंथ उक्त लक्षणों पर किस सीमा तक खरा उतरता है, पहलों को चिन्हित करना जिनमें रामायण महाकाव्य की परंपरागत परिभाषा से आगे जाकर एक धर्म ग्रंथ, इतिहास और जीवन दर्शन का दर्जा प्राप्त है। वाल्मीकि रामायण का महाकाव्य में निहित उसकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना यह अनुसंधान उद्देश्य है। यह शोध मुख्यतः गुणात्मक संशोधन पर आधारित है। इस शोध के प्राथमिक स्रोत में रामेण रामदासेन लिखितम वाल्मीकि रामायणम का हस्तलिखित एवं इसका संशोधित प्रकाशनों का अध्ययन किया गया है। आप श्री समर्थ जी का आदर्श हस्तलेखन और उनकी ने खुद ने लेखांकित किया बहुरंगी चित्रकथा पीपीटी में देख सकते हैं। साथ ही द्वितीय स्तोत्र के रूप में आचार्य दंडी का काव्यादर्श, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण तथा रामायण पर लिखित आधुनिक विद्वानों के समीक्षात्मक कृतियों का अवलोकन किया गया है। यह ग्रंथावलोकन है। प्राप्त सामग्री का तार्किक एवं गहन विश्लेषण करते हुए महाकाव्य के सिद्धांत और रामायण का व्यवहार का बीच तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। रामायण का श्लोकों, प्रसंगों और चरित्र चित्रण की व्याख्या करते हुए उनमें निहित काव्यात्मक, नैतिक और दार्शनिक अर्थों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में महाकाव्य का विशिष्ट लक्षण निर्धारित किए गए हैं। महाकाव्य का कथानक विशाल और व्यापक जीवन चित्रण करने वाला होता है। सर्गबंधो महाकाव्यम अर्थात सर्गों में बंधी हुई रचना ही महाकाव्य है। वाल्मीकि रामायण का 7 कांडों में लगभग 640 में विभक्त है, जो आवश्यक सर्गों की शर्त से कहीं अधिक है। इसमें कुल 24,000 से अधिक श्लोक है, इसलिए इससे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। यह एक सुसूत्रित सुगठित वास्तुशिल्प है जिसमें प्रभु श्री राम जैसे व्यक्तिमत्व सर्वत्र विचरण करते हैं। महाकाव्य की कथा शुद्ध ऐतिहासिक होनी चाहिए, न कि काल्पनिक। रामकथा वाल्मीकि रामायण का आत्मा है और इस शुद्ध इतिहास माना गया है। इसमें इक्ष्वाकु कुल की 42 पीढ़ियों, निमि की पीढ़ियों, वानर कुल का विस्तार, राक्षस कुल की उत्पत्ति, ऋषि मुनियों का इतिहास, सृष्टि निर्मित के टप्पे, नगरों के वास्तुशिल्प आदि अनेक तथ्य अंतर्भूत है। कथा का वास्तुपटल विशाल होना चाहिए। रामायण में अयोध्या का राजसी जीवन, मिथिला की संस्कृति, दंडकारण्य का वनवास, किष्किंधा की वानर सभ्यता और लंका का ऐश्वर्य का विस्तृत भौगोलिक और सामाजिक चित्रण उपलब्ध है। महाकाव्य का नायक इतिहास प्रसिद्ध, उदात्त, महान, उच्चतम चरित्र वाला, धीरोदात्त और आदर्श गुण संपन्न होना चाहिए। वह वैभवशाली, भद्र, कुलीन और यशस्वी हो। भगवान श्री राम का चरित्र त्याग, मर्यादा, वीरता, धर्मपरायणता का प्रतीक है, जो इन सभी लक्षणों को पूर्ण करता है। नायक का संपूर्ण जीवन चित्रण होना चाहिए। रामायण में केवल नायक ही नहीं बल्कि कथा में गुंथे हुए समस्त पात्र एक से बढ़कर एक भारदस्य व्यक्तित्व के धनी है और उनकी भूमिका किसी भी दृष्टि से गौण चित्रित नहीं है। विचार विमर्श, दूत, प्रयाण, युद्ध और नायक का अभ्युदय, इन पंच संधियों का होना आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण में इन सभी संधियों का स्पष्ट प्रत्यय मिलता है। कथा वास्तु का सुगठित वास्तुशिल्प इन संधियों से पूर्ण होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर्वर्ग में कम से कम एक
कि सांगोपांग प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना होता है। रामायण की मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना, कर्तव्य का पालन और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाना है। यह आत्मचिंतन की ओर भी प्रेरित करती है। यही रामायण महाकाव्य का उद्देश्य है। निर्दोष शब्दार्थ, समयोचित अलंकार और सद्वस्तु चिंतन करने वाला महाकाव्य का स्वरूप होता है। प्रधान नवरसात्मक रचना होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सभी रसों का समावेश है, किंतु जन स्वभाव और प्रसंगानुसार करुण एवं श्रृंगार रस का प्रभाव अधिक स्थायी है। रामायण में मुख्य रूप से अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका शैली रचना विधान प्रसन्नता देने वाला प्रासारिक है। महाकाव्य का आरंभ नमन से होना चाहिए। सज्जनों के गुणों का वर्णन और दुर्योधन की निंदा होनी चाहिए, जिसका वाल्मीकि रामायण में स्पष्टतया पालन हुआ है। सर्ग के अंत में आगे की कथा का सूत्रोवाच होता है। जीवन का विविध अंगों का समृद्ध चित्रण है। कथानक धारावाहिक है, मार्मिक है। यद्यपि युद्ध जैसे प्रसंग है, तथापि नायक का वध नहीं होता। राम के अभ्युदय और आदर्श राम राज्य की स्थापना के साथ ही रामायण का कालातीत आदर्श समापन होता है। रामायण में सृजनशील साहित्य का बीज अंगभूत है। वाल्मीकि रामायण भविष्य में आकार पाने वाली अनेक संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं का महाकाव्यों का एवं रचनाओं के लिए बीजभूत है। आधुनिक साहित्य को उपजीविका का आधार देने वाला केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सजीव साहित्यिक परंपरा का आरंभ है। रामायण ने भारतीय उपमहाद्वीप को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधन किया है। आज रामकथा आज भी अनेकानेक देशों के कोने कोने में विविध रूपों में है। वाल्मीकि रामायण की महानता केवल तकनीकी लक्षणों तक पूरा करने में नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़कर परंपरागत लक्षणों से परे का विशिष्ट महाकाव्य है। यह महाकाव्य मर्यादा, पुरुषोत्तम राम, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श भक्तों को चरित्र को माध्यम से मानव जीवन का आदर्शों का प्रतिपादन करता है। राजधर्म, पितृधर्म, पुत्र पत्नी धर्म, मित्र धर्म आदि का विस्तृत विवेचन जटिल मनोभाव से युक्त है। कई का अंधा प्रेम, रावण का अहंकार और ज्ञान, सीता की आंतरिक पीड़ा और ये सामाजिक दर्शन काव्य को मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रामायण महाकाव्य का अभ्यास से ही काव्य शास्त्र का सिद्धांतों का विकास हुआ। अभ्यास के लिए रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य समक्ष थे, इसलिए महाकाव्य की व्याख्या संभव हो सकी। इनमें भी वाल्मीकि रामायण एक सर्वांगीण आदर्श महाकाव्य, इसलिए उनकी उत्तमोत्तम संकल्पना को महाकाव्य की कसौटी के लिए प्रमाणभूत स्वीकार किया गया है। इस शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य विधा का न केवल आदि बिंदु है, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण और जीवंत उदाहरण है जिसने इस विधा के लिए मानदंड स्थापित किया। किंतु इसकी सच्ची महत्ता इसका काव्यशास्त्रीय ढांचा से आगे उस जीवन दर्शन में निहित है जिसमें प्रतिपादित किया गया है। वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य होने के साथ साथ एक धर्मशास्त्र, एक इतिहास, एक दर्शन ग्रंथ और भारतीय सभ्यता का सांस्कृतिक कोश भी है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस की चेतना में रचा बसा ऐसा महाकाव्य है जो प्रत्येक युग में नए अर्थ देता रहता है और मानवता को धर्म, न्याय और मर्यादा का मार्ग दिखाता है। वर्तमान में वंदे मातरम गीत की सार्धशती मनाई जा रही है, जिसका उगम सीधे वाल्मीकि रामायण में ही निहित है। इस अत्यंत समयोचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह विवेचन श्री रामचरणों में अर्पित करता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ। जय आप सभी बहुत बहुत को धन्यवाद। मेरे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने लगभग समय में अपनी बात पूरी की। अगर हमारे किसी भी जो श्रोता हैं जो अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन सेशन को, अगर कोई एक प्रश्न हो तो मैं स्वामी जी से निवेदन कर सकता हूँ उसका उत्तर देने के लिए। हमको एक महाकाव्य, एक ग्रंथ किस तरीके से महाकाव्य बनता है, उसकी क्या क्या कसौटियां हैं, उसके बारे में शरद जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमको बताया कि किस तरीके से वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य के रूप में स्थापित किया गया। और न केवल ये बताया, बल्कि ये भी बताया कि उसके माध्यम से समाज के, जीवन के, मर्यादा के कौन कौन से पहलुओं को उसने छुआ है। इस सब चीजों पर उन्होंने अपना जो शोध है वो प्रस्तुत किया हमारे सबके सामने। अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया तुरंत बताएं, अदरवाइज
ठीक है, अब हम अगले अपने स्पीकर की तरफ चलते हैं। शेवटचा होता ना आलेला. जी, धन्यवाद। लीना पांडे जी, वो उपलब्ध है हमारे मध्य में। महात्मा बल संपन्नो रावण, इस पर वो संस्कृत में मुझे लगता है अपना शोध प्रस्तुत करेंगी। हाँ, लीना पांडे जी। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं लीना पांडे और मेरे रिसर्च पेपर का टाइटल है महात्मा बल संपन्नो रावणः श्री राम। सर, हम सभी जानते हैं कि श्री वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य माना जाता है और इसकी संरचना सप्तकांड के रूप में हुई है। सर, राम इस काव्य के नायक है और रावण प्रतिशोध। महाकवि वाल्मीकि के प्रसंगानुसार दोनों का वर्णन करने के लिए अनेक श्लोकों की रचना की गई, और यदि हम इनके द्वारा दोनों के लिए प्रयुक्त विशेषणों पर भी गौर करें तो हमें मानव स्वभाव का एक अच्छा खासा अंदाज आ जाता है। और संपूर्ण रामायण संहिता में रावण से संबंधित महात्मा ये विशेषण दो स्थानों पर है सर। सर, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहला जो स्थान है युद्ध कांड सर्ग 71 में है सर। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण लीना जी, आपकी कोई पीपीटी भी है? सर नहीं सर। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओके सर, कुंभकर्ण के वध के बाद रावण पक्ष का दुखी होना स्वाभाविक था। उनका क्रोध और भी बढ़ गया। रावण का पुत्र इंद्रजित युद्ध के लिए आगे बढ़ा। इंद्रजित तेजस्वी वीर और बहुत ही ज्यादा दर्शनीय था। राम को उसके बारे में पता नहीं था। अतः यह योद्धा कौन है जो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं? श्री राम के स्वाभाविक रूप से विभीषण से पूछा, तो विभीषण ने परिचय देते हुए कहा कि दशग्रीवो महातेजा राजा वैश्रवणानुजः भीमकर्मा महात्मा ही रावणो राक्षसेश्वरः। यानी अर्थात, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। अर्थात भगवान जो कुबेर का छोटा भाई, महातेजस्वी, महाकाय, भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी महात्मा राजा रावण है, उस उनको एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जो बल में रावण के ही समान है। ये पहला स्थान। और सर, दूसरा स्थान है जहाँ युद्ध कांड के सर्ग 109 में है, जब रावण मारा जाता है। सर, रावण मारे जाने के बाद तब राम विभीषण से कहते हैं, मरणांतानि वैरानि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो मम अपि एषा यथा तव। यानी अर्थात विभीषण, शत्रुता मरणांत ही होती है। अब शत्रुता का प्रयोजन समाप्त हो गया। अब उसका अंतिम संस्कार करो। रावण जैसे तुम्हारा अब मेरा भी छोटा भाई, मेरा भी भाई है। परंतु विभीषण में राम के समान उदात्त संस्कार संस्कारित नहीं थे। वह रावण की दुष्टता को भूल नहीं सके। और वह कहते हैं, संस्कृत पूरा श्लोक है और फिर मैं शॉर्ट में पढ़ रही हूँ। अर्थात, मैं ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता जिसने धर्मार्थ सहित कल्याण का विचार नहीं किया और जिसने धर्म का मार्ग त्याग दिया है, जो क्रूर, नृशंस, मिथ्याचारी और जिसने पराई स्त्री का अपहरण करने का कृत्य किया है। और यद्यपि ज्येष्ठ भाई के रूप में ये मुझे पूजनीय और गुरु महिमा का पात्र है, तथापि उपरोक्त दोषों के कारण पूजनीय नहीं है। यदि मैं इसका महिमा मंडन करूंगा तो इस संसार में लोग मुझे भी नृशंस समझेंगे। लेकिन सर, राम ने विभीषण के इस अविशिष्ट विचार को स्वीकार नहीं किया और वो पुनः से कहते हैं कि हे विभीषण, मैं तुमसे पुनः कहता हूँ, सुनो। इसमें संदेह नहीं है कि यह निशाचर, अधर्म और अनृत से युक्त था, लेकिन किंतु वह तेजस्वी, बलवान और वीर था। और सुना है कि वह इंद्र आदि देवता से भी पराजित नहीं हुआ था और वह बलवान महात्मा था और जिससे लोग भयभीत रहते थे। यानी महात्मा बल संपन्नो रावण लोक रावण। और फिर भी शत्रुता तो मृत्यु पर्यंत ही निभानी चाहिए। हमारी शत्रुता का अंत उद्देश्य समाप्त हो गया। अब इसका अंतिम संस्कार करो। अब यह जैसे तुम्हारा वैसे मेरा भी भाई है। सर, शॉर्ट में निष्कर्ष में दो बातें बतानी थी सर। सबसे पहली बात है कि मरणांतानि वैरानी,
यानी सर यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत उत्कृष्ट शिक्षा है, जो इतिहासकार भी जानते हैं कि इस संस्कृति को अपनाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अफजल खान का अंतिम संस्कार कितने उचित ढंग से किया था। और सर हम मुझे दूसरी बात ये बतानी है कि महात्मा बल संपन्नो रावण, और यह भी हमारी भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत उत्कृष्ट शिक्षा है कि वे अपने शत्रुओं की भी प्रशंसा करते हैं। कहा भी गया है कि महान लोगों का स्वभाव होता है कि वे अपने शत्रुओं की भी प्रशंसा करते हैं। वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि के रामायण में सामाजिक समरसता का जो उदात्त यथार्थ चित्रण वर्णित है, वह विश्व के किसी अन्य स्थानों पर प्राप्त नहीं होता। आज आवश्यकता है कि विश्व के जन जन के कंठ कंठ में इसका रसास्वाद करा जाए, तभी आतंकवाद, नस्लवाद आदि को समाप्त कर प्रेम भावना को भरा जा सकता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीना जी, थैंक आपने हमारा काफी समय बचा दिया। और अभी हम आपके लिए, अगर हमारे किसी हाँ पार्टिसिपेंट के पास कोई क्वेश्चन होगा तो आराम से ले भी सकते हैं। हाँ सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स में से किसी के पास अगर कोई प्रश्न है? हाँ आपने बहुत अच्छा ये ढूंढ के लाए, इसका जो टाइटल है। हाँ सर, संस्कृत श्लोक भी है, समय की कमी के कारण मैंने पढ़े नहीं, तो वो श्लोक काफी अच्छे। हाँ नहीं, इस किस तरीके से हाँ। आपने, राजरानी दीदी जी कुछ पूछना चाह रही है लग रहा है। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये श्री राम ने कहा रावण को, तो रावण को महात्मा बल संपन्न रावण? मैम रावण तो मर गए उस समय, उनका देहांत हो चुका था। वो विभीषण को बता रहे, विभीषण कहते हैं ना कि जी, मैं। राम का वाच है, यही पूछना चाह रही थी। हाँ सर, हाँ मैम। आगे जी। राम ने बोला था कि महात्मा बल संपन्न रावण, हाँ जी, ये बस राम। ये हाँ बस स्पष्ट करना था, बस। थैंक यू, धन्यवाद। उन्होंने दो जगह बताया है कि दो जगह इसका हाँ रेफरेंस इनको मिला है कि जो राम ने विभीषण को एड्रेस करते हुए ये बात कहा है। हाँ, और पहले समय खुद विभीषण बोलते हैं, जब इंद्रजीत का वो परिचय देते हैं कि वे इंद्रजीत कौन है, ऐसे जब राम पूछते हैं, तब उस समय वो जब रावण का परिचय करते समय बोलते कि तब भीम कर्मा महात्मा ही रावण और राक्षसेश्वर, यानी महान तथा राक्षसों का स्वामी महात्मा राजा रावण है, उनको एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ भी महात्मा ये कहा गया है, एक ये है, और दूसरा युद्ध सर्ग में 109 में कहा गया है। ये ये आपने बहुत अच्छा एक मतलब विषय सबके सामने रखा है कि किस प्रकार से शत्रु के गुणों को भी कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और एक उच्च आदर्श स्थापित कर सकते हैं, और उसी वजह से श्री राम को हम प्रभु राम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो मच सर। टीना जी। अभी हम अगले अपने वक्ता की तरफ चलते हैं, और हमारे मध्य में अब माधवी गोडबोले जी भी उपस्थित हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं माधवी जी से कि जी माधवी जी। सर, अश्विनी जी उपस्थित है और अश्विनी जी प्रेजेंट करेंगी ऑन अश्विनी जी करेंगी, बिहाफ ऑफ ठीक बोथ ठीक। ऑफ अस। जी ओके सर, ओके, जी ठीक है सर। ठीक है ठीक है, जी जी जी, अश्विनी जी और माधवी जी। Unfortunately, I'm on the way, so I'm in travel. So Ashwini ji. Yeah, so the is- title is Deciphering Valmiki's Ramayana to Identify Distinctive Features of Cultural Landscape of Ancient India. So Ashwini ji, please go ahead. इसको अगर फुल स्क्रीन कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा अश्विनी हाँ, जी। एक मिनट करने की कोशिश कर रही हूँ। स्लाइड शो अभी हो गया? जी जी, अब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है कंटेंट जी की? जी, हाँ हाँ, मूव हो रहा है। हाँ ठीक है। नमस्कार,
I'm Dr. Ashwini Pethe, along with my colleague Dr. Madhavi Godbole from MIT ADT University, Pune. I will present a few concepts from the paper titled as Deciphering Valmiki Ramayana to identify distinctive features of cultural landscape of ancient India. In this presentation, we will discuss geography as described in Ramayana, how geography of Bharatvarsha was transformed with the Gangavataran, how geography influenced planning and urban features of urban centers during Ramayana, role of rituals in making the cultural landscape during Ramayana, role of educational institutions in making the cultural landscape during Ramayana. Indian traditional knowledge passed orally through Shrutis and Smritis and was later written. These texts are usually in the form of narratives through dialogues. Ramayana is also a Mahakavya presented as a dialogue between various sets of people. This presentation examines the cultural landscape in Valmiki's Ramayana to understand the nature-culture relationship using primary text and allied resources. The epic 7 Kandas, with over 24,000 verses, trace Sri Ram's journey across Bharatvarsha from Ayodhya through forest, rivers, seas, till Lanka, culminating in his return via Pushpak Viman, recounting the geography in reverse. Now let us look at the geography as described in Ramayana. The Ramayana presents a detailed cultural landscape through descriptions of urban, rural, and forest life during Sri Ram's travel. Balakanda, Ayodhya Kanda and Aranya Kanda highlight the sacred rivers like Ganga, Yamuna, Sharayu, and mountains such as Himavat, emphasizing the sacrality of nature and river-based agrarian life. It displays worship centered on yajna and nature reverence rather than temples. It talks about some shrines in palaces, homes, and forests. Terms like Punya Sarita, Divya Tripathaga, Shreshta Dalita, Suranadi Ganga, Papa Nashinim, Sukshetra, Sashya Malini are used for the rivers. Sacrality of nature is the central idea. Rivers and their confluences are mentioned as divine, sacred, or auspicious. Rendering divinity to geographical features creates the concept of sacred geography as well as strengthening the human-nature relationship. This sacrality demonstrates a form of environmental stewardship. Agrarian life depended on river valleys, which were considered the lifeline of civilization. The dependency of rivers also led to their divinity. Although there are descriptions of a number of dense forests, mango groves, etc., there is no concept of sacred grove found anywhere in the narrations of Valmiki Ramayana. It actually suggests that entire landscape was considered sacred. Now let us look at how geography of Bharatvarsha was transformed with Gangavataran, the descent of Ganga. The descent of Ganga was initiated to liberate the ashes of Sagaraputras following intense penance by King Bhagiratha over many years. After his austerities at Gokarna Tirtha, Brahma agreed to send the celestial river to earth. The descriptions mention that the immense force of Ganga could not be borne by Prithvi, so Shiva restrained her in his jatas for a couple of years before releasing her into Bindu Sarovar. From Shiva's head, Ganga descended to the earth with great force and then was further divided into several flows. All these description appears very poetic, and as of course it is a part of Mahakavya, but it can be imagined or deciphered that Bhagiratha spent many years in designing and constructing a large reservoir with the help of Shiva, and then from there created channels to bring water on the lower fertile lands. This slide shows the sculpture at Mahabalipuram displaying the descent of Ganga. The text mentions the 7 auspicious streams emerging from Bindu Sarovar. 3 streams, Ladini, Pavani, and Nandini, flowed eastwards, and 3 streams, Suchakshu, Sita, and Sindhu, flowed westwards, while the main Ganga flowed southwards and then eastwards. This distribution reshaped the physical and cultural geography of the subcontinent.
As Ganga flowed across the northern India, it enabled the growth of major Janapadas and Mahajanapadas such as Kashi, Koshala, Magadha, Anga, Vatsa, Prayaga, Shrungaverapura. These settlements developed along the river and its tributaries contributed to the fertile lands and water resources and trade routes. Even today, Ganga Basin remains central to the life in northern India. Now, looking at this entire thing, we can understand that introduction of Ganga River into Bharatavarsha is a big event that altered the geography of Bharatvarsha. It proves the ingenuity of infrastructural advancements at that time, the hope, patience, and confidence with which few generations strive hard to create this passage of river on this land is worth appreciating. Yes. Now let us see how geography influenced planning and urban features of urban centers during Ramayana. Valmiki Ramayana gives a good portrait about how geography shaped the planning and urban features of cities described in the Ramayana. Let us see the planning of Lanka as a key example. Lanka presents a model shaped by coastal and mountainous geography. Situated on Mount Trikuta and surrounded by the ocean Lanka, it had four-fold defense combining natural barriers such as sea, mountains, and forest with advanced fortifications, which also included moats, drawbridges, and weapons. The city attributed to Vishwakarma's design, it featured organized streets, multi-storied mansions, public buildings like parking for Pushpak Viman, gardens, ponds, richly detailed flora and fauna. Abundant ocean resources influence the material richness which is evident in the pearls, corals, gems, which were used in building construction and articulation. Overall, the Ramayana depicts urban centers were deeply responsive to the geography, integrating natural features, defense, economy, and cultural life into their planning. Now, if you look at, let us look at the role of rituals in making of cultural landscape during Ramayana. Now, these rituals played a significant role with Yajnashala emerging as an important urban feature. The Ramayana contains multiple references to yajnas, highlighting the construction of yajnashalas as key elements for city planning. In the Balakanda, King Dashratha established the Yajnashala on the north bank of river Sharayu to perform the Ashwamedha Yajna for progeny. This sacred site was carefully selected, ensuring least loss to the environment there. And eminent Vedic scholars and sages such as Vasishtha, Vamadeva, Jabali, and Kashyapa were invited to conduct the ritual. The preparations for the yajna extended over nearly a year, followed by extensive coordination involving Brahmins, artisans, carpenters, car makers, diggers, astrologers, performers, administrators, and so on. This indicates that rituals were inclusive, large-scale public activities engaging diverse sections of society. The descriptions mention large-scale production of bricks, raised platforms, multi-storied buildings, spacious apartments, various types of quarters, reflecting significant temporary and permanent infrastructural development. Workers and participants were also hosted, rewarded, and gifted, which also further stimulated the economic activity. The Ashwamedha Yajna employed the Shenachiti for the Yajna Vedi, reflecting precise spatial planning. Comparable to the hosting of modern international events, such rituals like Yajna that mobilize resources, labor, trades across the region. The infrastructure created for the Yajna or Yajnashala was partly temporary and partly permanent, and later it got integrated in the urban fabric. It is likely that such Yajnashalas evolved into centers for learning and continued ritual activity, contributing to the long-term cultural, educational, and demographic transformations of the city. This can be compared with, hosting of Olympic Games by a country in today's context.
the entire city or country is engaged in the preparation and major development activities are mobilized to host the large mass of foreigners in the city. This is very similar to that. And I'm sure later on this infrastructure would become a part of city. Few of these invited people might be staying longer in the city. Also, the invited priests from outside might have stayed back, and the ritualistic activities in Yajnashala would continue further. These acts must be mobilizing trade as well as might be leading to permanent migration. Why we are saying that? Because lot of all the descriptions actually explain that this yajna went, the preparations for the yajna went on for an year. The people, the kings and prince and princesses came from outside. Dr. Ashwini, if you can conclude, it will be better. Yeah, time is... Okay, so the last slide is regarding educational institutions. So I will just skip a few and probably I'll just rightly go to the last slide, saying that we can conclude here that narratives in Ramayana are best examples and concepts of sacred geography and cultural landscape. Example of Gangavataran shows the ingenuity of infrastructural advances that altered geography of Bharatvarsha. Urban centers were deeply responsive to geography, integrating the natural features, defense, economy, and cultural life into planning of cities. Rituals such as Yajna acted as catalyst for developmental activities in the urban centers, and importantly, educational institutions were integral components of the cultural landscape, blending the learning, ritual, and the social life. Thank you. Thank you very much for being almost in time and for such a knowledgeable presentation. I request any of our attendee has any question to Dr. Ashwini. My name is Ramchandra Shukla. Ji Shukla sir. This foreigner, the speaker has mentioned the foreigners. Who were the foreigners at that time? At that time, the foreigners were the people from different Janapadas and Mahajanapadas for them, who brought lot of trade and lot of mobility into the urban centers, the Janapada of Ayodhya. Okay, fine. Thank you. Dhanyavad. I thank Dr. Ashwini and co-author Dr. Madhvi for insightful presentation. And now we move to Thank you, sir. Now we need to move to next presentation by Dhananjay Vasisht ji. Dhananjay ji, you can please open your camera, and the talk will be on from Sevak to Sadguru, the unfolding of Guru Tattva through Lakshman in Valmiki Ramayana. Thank you, sir. Sir, Pratham, I would like to seek blessings from all of you who are present here, because I know आप सभी में मैं बहुत ही अनुज हूँ, and I really need your blessings and prayers, जिससे कि जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको मैं यहाँ पे शेयर कर सकूँ आप सभी के साथ. तो my name is Dhananjay Vashisht, and I'm a researcher here in Bhaktivedanta Research Center, which is affiliated to University of Mumbai. And यहाँ पे today we are, as sir has told, that my topic is from Sevak to Sadguru, the unfolding of Guru Tattva from Lakshman, who is in Valmiki Ramayana. So basically, for any relationship, we need two people. By the way, I will not be sharing any PPTs, so it's without PPTs. So in any relationship, there are two people, and that relationship can be happy or satisfying if both the party are on the same page. So as per our scriptures, so there are primarily there are 5 kinds of rasas, starting from Shantaras, Dasyaras, Sakhyaras, Vatsalyaras, and Madhuryaras. Now, if I'm saying Dasyaras, that means the dealings between
two people. One person is acting like a das or a servant, and another person is acting as a master. But the point is, the person who is acting as a servant, he or she is not treated as a slave. That is a loving servant. That's an important thing whenever we talk about the dasya bhav. Similarly, when we talk about the sakhya bhav, so the two people, they are at the same level, and they are in a friendly, they have friendly dealings. So now we have seen Lakshmanji as the younger brother of Lord Ram, and who is always assisting Lord Ram. For example, if we see, um, Lord Ram was told that he is going to be coronated next day. And Lord Ram, till now, he does not know whether Kekai has asked for those two boons. So next day, Lord Ram is simply going to the palace where Dashrath was there, Dashrath Maharaj and Kekai was there. But and Lakshmanji, he is following. In fact, he is holding the umbrella and he is assisting Lord Ram. So there, and he is not standing, or he is not walking alongside Lord Ram. He is walking behind Ram. So which shows that that Lakshmanji is acting as assistant, not a prince. He is behind Lord Ram, and he's holding the umbrella. And then after some time, then they reach the palace, and then so many things happen. So basically, I'm just trying to highlight this particular point, that Lakshman is acting as assistant to Lord Ram, a sevak, a loving sevak. He deliberately, he's choosing to be an assistant. Another example we can take. uh, so Lord Ram, he is not agreeing to take Lakshmana to Ayodhya, to the forest. So during that time, Lakshmana is trying to convince Ram with different strategies. One argument which he gives is, see, so he is not going with Lord Ram in the capacity of brotherly love. He is going with Lord Ram in a capacity of to execute the functional services. Functional services means he is saying, see, you are going, then you will require the hut to be made. I'll make the hut for you. You will be going, there will be so many thorns on the road. I will remove those thorns. And there will be protection will be required for you. I will do that part. So it's a functional service, functional role, not the brotherly duty. So this shows that Lakshmanji is in a dasya bhav, a loving dasya bhav, servant attitude. So like these are two, there are several other examples also related to this. But now after this thing, let us move towards, so generally these kind of episodes we have known about Lakshmanji. But Lakshman, at the time of need, he is also acting as a proper guru, or proper sadguru, or a proper mentor. So at many places, so let's take example. So as soon as they enter into the forest, the first major demon which was there was Virad, Virdha. Yeah, actually I need to yeah, Virad. Virad is the proper pronunciation. So this fellow, this demon, he tried to take or try to capture Sita Ma. So he held Sita Ma in his hands. On seeing this, Ram became very helpless and very distressful. And if we see the actual verses, the shlokas, during that time, which Lord Ram is saying, he's saying this is such a painful, it is more painful than me losing the whole kingdom of Ayodhya. He's saying like this. So at that distressful time, Lord Lakshmana, till now who was acting as an assistant, he takes a role of a mentor. He takes a role of a guru. And he very, with full emphasis, he's saying, see, this is not a time to be so hopeless. You have to act and you have to fight with this demon. And in fact, he says that I am going to kill this demon and we are going to protect Sita. Don't worry. So he is acting as a guru. So Lakshmana is representing the Guru Tattva through this particular Leela. Then if we go further, um, then yeah, there are other episodes also, but one major we see in Kishkinda Kand.
So when Lord Ram, after meeting Shabari, and then he moves towards Pampa Sarovar near the in the Kishkinda area, the first Sarga of Kishkinda Kand, Lord Ram becomes overwhelmed by seeing the beauty of the Pampa Sarovar. Basically, the point was he started missing Sita more by after seeing the beauty of this particular area, and he was being very hopeless. And during this time, Lakshmana again pitches in, and in fact, I'll just speak that shloka which he says. त्यज्य कामव्रतत्वं व्रतत्वं शोकं समन्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं न अवबुध्यसे. So this is for Kishkinda Kand, first Sarga 123, shloka number. So here he specifically says, Are, this is not the way a Mahatma does. You are Mahatma. Mahatma, see, definition of Mahatma is given by Krishna in Bhagavad Gita also. Mahatmanastu mampartha daivam prakritam ashrita. So Lakshmanji is saying to Ram, Lakshmanji is the same younger brother who will not even speak one word without the permission of Lord Ram. And this Lakshman, same Lakshman, is speaking such harsh words to Lord Ram because right now it is needed. That was the important point. So he is taking a role of a guru. Another episode we can see, in fact, when Sugriva he shows the ornaments which Sitama threw, and then also Lord Ram became very distressful and he became very angry also. At that time also Lakshmanji consoled him. And another time is when they were waiting for four rainy months to get over. So Ram and Lakshman, they were waiting outside in the cave outside the Kishkinda kingdom. And during that time, so Lord Ram is constantly he's thinking about Sitama. And during that time, sometimes he would share his heart to Lakshman also. Lakshman, see, I am seeing here such a beautiful place. I don't know how Sita is surviving. So he was becoming many times very hopeless. So during that time also, in the 27th Sarg of Kishkinda Kand, and I'm talking about the verse number 34, specifically it is said, Alam veera vyatham gatva न त्वं शोचितुम अर्हसि शोचतो hi avasidanti sarva artha viditam hite. He says, with this kind of anguish, you will, lose the track of the objective. Our objective is to search Sita, but you are getting angry on different things. You are becoming hopeless. We cannot achieve the objective if you are doing like this. So Lakshmana, see, just by seeing that role of Lakshmana who is just holding an umbrella, you know, in fact, once Lakshmana heard the actual words of Kaikeyi when she was saying that you have to go, she was saying to Ram that you have to go to the forest. Lakshmana was there on the doorstep. He heard everything, but he did not speak a single word. He was angry, but he did not speak. This is a kind of Lakshmana who does not speak. But here, this same Lakshmana is speaking such heavy words. He is taking a role of Guru. Just like in Bhagavad Gita also, Arjuna in 2.7 Bhagavad Gita, Arjuna says after getting so much thoroughly confused, he tells to Krishna, I just forgot that shloka it just came out of. So basically he says, Shishyaste ham shadi mam tam prapannam. That Krishna, now you take a role of a spiritual master and I'll take a role of a student. And now you guide me. I'm thoroughly confused. So in the same way here, Lakshmana is taking a role of that guru. And there are many other occasions also, but we have just 10 seconds remaining. So I'll just make one last point here, just one, it might take just 20 seconds. So Lakshmana in Ram Leela is Balaramji in Krishna Leela. And Balaramji is also considered as a guru, Adi Guru. So Balaramji, just like Ram and Krishna are parallels, Lakshman and Balaramji, they are parallel. And one final point, that the guru is someone who facilitates, who creates the opportunity for Lord to enter. And one example is the six pregnancies of Devaki were destroyed, killed. I mean, 6 sons of Devaki were killed. The 7th pregnancy was Balaramji.
But Balaramji, he was shifted from Devaki's womb to Rohini Ma's womb. So he did not take birth from Devaki's womb. So now, and the eighth one was Krishna. So basically, why Balaramji came in the womb of Devaki? Because to create the environment for welcoming Krishna, who is going to be the eighth child. So Balaramji is acting as a guru who is facilitating, who is creating the space for Lord to come inside. Also, this Balramji, now he is moving to Gokul. And after some time, when Krishna will appear, the same Krishna will be going to Gokul also. So now, because he has shifted himself to Gokul, that means Rohini Ma's womb, now he is creating space for Krishna to come in Gokul also. So Balramji is acting as a spiritual master, and same Guru Tattva is also represented by Lakshmanji. So thank you for giving me the time to share these thoughts. Thank you, Dhananjay ji, for this very insightful discussion. I will say that how Lakshman has a das bhav, servant bhav for Rama when he was going to forest, and then you explained that how it is going to create a different kind of relationship between brothers. Thank you. We can have 1 minute to have any question if any one of us have any question to young scholars. May I ask one question? Ji, please, Shukla sir. My question to speaker is that what are the source of information other than Valmiki Ramayana? Okay. तो ये जो बलराम जी एज अ गुरु तत्व, दिस इज फ्रॉम चैतन्य चरितमृत. And also we have Chaitanya Charitamrita, and also there are many scholars who are coming from Madhvacharya's sampradaya, like Jiva Goswami. So they have also written commentaries. So that is also there. And apart from that, there are few other scriptures which also gives, I think Brahma Samhita, there are some few scriptures which also talks about this Lakshman and Balaram representing the Guru Tattva, the Adi Guru, the Sankarshan also we call them. Okay. Thank you very much. Thanks. Thank you, Dhananjay ji, for keeping your talk in time also. It facilitates some discussion also. Now I request Uma Shankar ji, Madam Uma Shankar ji, for her talk on the power of Aditya Hridaya. Yeah. Am I audible? Ji, loud and clear. Yeah. Okay. Can you see my presentation? Not now. 1 second. It's not shared as of now. Okay. Can you see now? Yes, now it is appearing. It will appear, I hope. It is still, yes, now it is there. Okay. Yeah. Am I on full screen? No, you are not on full screen. You are still on reading view. Okay, I'll move it slide by slide. Anyway, let me start. Namasadase Pujantam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Vande Valmiki Kokilam Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. Depressive disorder, depression. Approximately 332 million people in the world have depression. In 2021, an estimated 7,27,000 people lost their lives to suicide. Suicide is the third leading cause of death in 15 to 29-year-olds as per the statistics published by World Health Organization as late as August 2025. Now, social stigma associated with treatment to this disorder is one big barrier for effective treatment. What if there is a proven way to come out of depressive disorder by reciting some mantras as given by sage Agastya
and as narrated by sage Valmiki in Srimad Valmiki Ramayana? It is a question of faith. If faith can move mountains, why not use it to treat some mental disorders? Aditya Hridayam. It is the 107th Sarga in Yuddhakanda of Srimad Valmiki Ramayana, the Adikavya, which tells the story of Rama and Sita. Aditya Hridayam is a set of 31 verses that gives hope and makes the person get back determination and oozes with positive energy as it contains the advice given by sage Agastya to Sri Ramachandra, who is considered an incarnation of Mahavishnu himself. Rama Ravana Yuddham. 5 chapters in Yuddhakanda describe in detail the fight between Rama and Ravana. Ravana, engulfed by lust, has the urge of winning this war, as his only goal is to get Sita at any cost. With the loss of his sons, his empire, his army, everything is lost, but he doesn't lose sight of his goal. Impelled by force of destiny and with his red eyes showing his anger due to infatuation, he approaches Rama, determined to kill Rama. At the same time, on the other side, our hero Rama is worried and standing with confused thoughts. Why? Because he has seen Lakshmana almost in deathbed, and he has said that in case Lakshmana goes to the world of Yama, then I will be quick to follow him, come what may. That was the mind status in which Rama was standing on the battlefield. That is how Aditya Hridayam, 107th chapter starts. Sarga starts. Tato yuddha parishrantam samare chintaya stitam Ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupastitam. Samare chintaya stitam. Rama is standing with worrisome thoughts on the battlefield. He considers killing himself in case Lakshmana dies in the war. With such depressing thoughts, Rama is standing in the battlefield is the first verse of Aditya Hridayam. That time, Daivadaisha Samagamya Drishtumabhyagatoranam Upagamna Pravitramam Agastyo Bhagavan Rishihi. Sage Agastya, who came to see the war, spoke to Rama, and those verses are titled as Aditya Hridayam. Sage Agastya. Why did Agastya come in person when all other celestials are standing in the sky, in the heavens, observing the battle of Rama Ravana? Why sage Agastya comes in person? When the mind is clouded, personal advice given face to face works much better and gives instant energy, and Rama needed such personal advice at that time. Rama had already visited Agastya's ashram along with Lakshmana and Sita, and the sage had given Rama some celestial weapons that would come handy during the war, because the sage knew that, the war is imminent to happen, and that is the avatar rahasyam of Rama. What is the use of weapons if the mind of the person who has to use those weapons is depressed? So Agastya literally rushes to the battlefield and reminds Rama to venerate his Kuladevata, Surya. Rama is from Raghuvamsha, which has the sun god as the deity of his dynasty. Encouraging words by Agastya. Rama Rama Mahabaho Shrunu Guhyam Sanatanam Ena Sarvan Arin Vatsa Samare Vijayishyasi. O Rama, the mighty armed, hear the following eternal secret by which you can conquer all the enemies in battle, my child. Modern psychologists say that the words we utter to the person in depression are very important. Agastya uses the word Mahabaho, meaning that he is very valiant. He reminds Rama that he has the requisite physical valor to win the war. He tells Rama to listen to an ancient secret that would give victory in the war.
The way the sage calls Rama as Vatsa, meaning child, is very endearing. When the affection and the concern is shown to the person in depression, they start coming back to normalcy when they sense the affection in the words of the person speaking to them. Falashruti of Aditya Hridayam, the speciality. Almost all shlokas on gods will have a final part which is called as Falashruti. This part tells what can be attained by reciting the particular shloka. In case of Aditya Hridayam, it starts and ends with Falashruti. Yena sarvan ari, all the enemies. This includes internal and external enemies within and out. This eternal secret revealed by Agastya, all enemies can be won over. Aditya Hridayam Punyam Sarva Shatru Vinashanam Jayavakam Japen Nityam Akshayam Paramam Shivam Sarva Mangala Mangalyam Sarva Papa Pranashanam Chinta Shoka Prashamanam Ayur Vardhanam Uttamam. Optimistic thoughts are to be repeated to bring energy into the mind of the person in depression. Is Agastya giving it to Rama only? Rama was just enacting the role of a human being and was making Agastya give this eternal secret to us for our use. Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Papa Pranashanam brings forth auspiciousness of all auspiciousness and destroys all sins. Once sins are removed, auspiciousness happens automatically. Chinta, Shoka, Prashamanam, Ayur, Vardhanam, Uttamam. Sad, worrisome thoughts will go and longevity will follow. Worry can cause diseases and reduce the life term, and when worry is removed, the life term increases with good physical and mental health, which would enable us to fight the battle of life with hope and positive thoughts. Puja to Aditya. Rashmimantam Samudhyantam Devasura Namaskritam Pujayasva Vivasvantam Bhaskaram Bhuvaneshwaram. From this verse onwards, Agastya is giving different characteristic features and names of sun god, which when counted come to 108. Ashtottara Satanamavali, like what we do to all deities when we do puja. Agastya leaves the battlefield. At the end of saying all this, he doesn't wait to see whether Rama is saying all that. Like a good guru, Agastya says that no one who worships Aditya comes to grief in the times of peril. Such positive words would give hope and energy to anyone. The sage leaves the battlefield just after advising Rama. Rama worships Aditya and he is told to start the battle immediately, Tvarate, by Aditya himself. Aditya's sun's effect on human body. Medical science says that sunlight is the main source of vitamin D. Research has shown that vitamin D's importance goes beyond calcium absorption for bone growth. Vitamin D receptors are widespread in brain tissue, and its form, which is biologically active in the body, has neuroprotective effects. In research conducted on a group of people above 60 years who suffered from dementia, a disease where the loss of memory happens, it was found that vitamin D helps in redeveloping cognitive health. If one stands facing the sun and recites Aditya Hridayam and do Surya Namaskar every day, Nityam, the effect is multifold. Akshayam Paramam Shivam, never-ending prosperity comes. Of course, Rama wins the war. Rama chanted the mantras as taught by sage Agastya, fought and killed Ravana and took back Sita to Ayodhya. The name Rama and the epic Ramayana are sure to deliver us to moksha. Thank you very much for the opportunity for this to present this in this conference. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, madam. Can we have some questions from our? Yeah. May I ask the question? Yes, sir.
I will request if anybody else wants to ask. Obviously, you can also. If okay, Shukla sir, please go ahead. Aditya Hridayam is written after Valmiki Ramayana or before Valmiki Ramayana? This is my question. No. It is a 107th Sarga in Valmiki Ramayana itself. It is a part of Valmiki Ramayana. In Yuddha Kanda, 107th Sarga is Aditya Hridayam. Because Rama, like 109 to 102, 99, 100, 102, 103, 104 chapters describe the battle in detail, Rama Ravana Yuddha. And then Rama is like, like how the earlier speaker was saying, he becomes hopeless. He becomes like, what do I do sort of situation. That is when Agastya comes. And 107th chapter of Yuddha Kanda is Aditya Hridayam, which is titled Aditya Hridayam, and it starts Tato Yuddha Parishrantam Samare Chintaya Stitam Ravanam Chagrato Drishtva Yuddhaya Supastitam. So it's part of Valmiki Ramayana. Thank you, madam. Thank you. Thanks. Yeah. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. All the speakers are very good. We are enjoying this session. Thank you so much. Thank you, Madam Umaji. We have the next speaker also present with us, Dhruv Parikshit ji. So may I request Dhruv, if you can open your camera. Yes, am I visible, sir? Yes. You are visible. Okay, sir. So, and you want to share some PPT? yes, sir. Please go ahead. I'm not sure how to share. Okay, we got it. So I'm not able to share my screen, I guess. Is it visible? It is not visible as of now. Okay, let me retry. There are two ways. Either you can send to me, I can share on your behalf. Okay. I can send you. Actually, I'm not using my regular device, so that is why this is happening. I understand. We can do this also. You send it to me in the meantime, and we may request our next speaker to present. You can send it to me through chat window. I will download and I will do the needful. On WhatsApp only, sir? I don't know whether you have my WhatsApp number. Are you in group, in that group, WhatsApp group? I'll check it. Yeah, so you can send it to me. I will do the needful. Okay. But to save the time for others, I request Irfan Ahmed ji. Irfan ji, I saw you over there. Irfan? Thanks a lot, sir. Yeah, thank you. So Irfan ji will be presenting on Ravan of Valmiki Ramayana and Pygmagia of Chinese Dai Ramayana, a critical comparison. Yes. So you will be using some PPT, Irfan ji? Yes, sir. I'm going to share. So have you received my PPT? I have sent you. Yes, I have received. Okay, sir.
But you will be presenting now after Mr. Irfan. No problem, sir. Hope, sir, my screen is getting visible now. Yes, your screen is quite visible. Good. Thank you, sir. And Please hope go I ahead. am audible, loud and clear. Yes, absolutely, absolutely. Please go ahead. Thank you, sir. So here we are talking about a native version of Chinese Ramayana, whose name is Lanka Sipho, in a minority language of China, in the state of Yunnan. Yunnan is in southwest of China. And there is a minority called Thai minority. They are the ancestors of Thai people of Thailand. So the Chinese Thai Ramayana is very much similar in content to that of the Ramayana from Thailand, that is Ram Kian. So this is my title for today's talk: Ravan of Valmiki Ramayana and Thamma Chak of Chinese Thai Ramayana. So Chinese Thai Ramayana is called Lanka Sipoho in a minority language of China, that is the Thai language. And interesting thing is that the script of Thai language has developed from our own Brahmi script. And another interesting thing is that almost all the scripts of countries in Southeast Asia, although China, of course, is in East Asia, not in Southeast Asia, but as we see that in almost each and every country of Southeast Asia, we have versions, native versions of Ramayana, at least one or more than one. So they all share the same script. They all have developed, I mean, from Brahmi. So here we are going to have a critical comparison, and who gives us this authority? So Manas itself gives us this authority. Hari Ananta, Hari Katha Ananta, Kahi Sunahi, Bahubadi Sab Santa. And since I am a Muslim, so many people say that what brought you to this study of Ramayana, and why are you comparing this with Chinese Ramayana? So I am an assistant professor of Chinese language since last 10 years at Central University of Sikkim, Gangtok. So, and this Irfanji, your voice is staggering some. subject. I don't know whether others are able to hear him properly. No, sir. His voice is No, No, we can't hear. For my doctoral dissertation, पुरखों के इल्म दानिश की बड़ी अतात करता हूँ. Sir. Oh, Now I think it's better. Please go ahead. I'm so sorry. Am I audible now, sir? Yes. Now you are better. Thank you. So I start with a couplet. पुरखों के इल्म दानिश की बड़ी अतात करता हूँ, बावजू होकर मैं रामायण पाक की तिलावत करता हूँ. And the first complete manuscript of this Chinese Ramayana was discovered only in 1956, and which is handwritten and is on palm leaves. And it was translated into Chinese language in 1981. And my research is based on the Chinese version, because I know Chinese language, and of course I don't know the minority language, which is Thai language. And I am comparing this
with critical edition of Valmiki Ramayana. Critical edition, which was published from Oriental Institute, Baroda, in the from the decades of 1950s. And this Chinese Ramayana is missing even in the famous work of Camille Bulke. His famous work is Ram Katha Utpatti or Vikas. Hope, sir, I am audible. You are audible. Yes, please go ahead. Thank you, sir. Thank you. So, Chinese Thai Ramayana is found in a region called Yunnan, and especially in the areas called Sichuan Panna in Yunnan state of China. As I already said, the script has developed from the Brahmi script of India, and the skeleton of this Chinese Ramayana is by and large similar to that of Valmiki Ramayana. And Ramayana reached this region of China between 6th and 8th centuries with the spread of Theravada Buddhism. One of the earliest available manuscripts is dated to 1312 Christian era. So here we will talk about two characters, Ravan and Phammachak. So the character who is representing Ravan in Chinese Ramayana is named as Phammachak. And although very little research has been done on Chinese Ramayana, I believe that this Phammachak word might have originated from Brahmachakra. Although the only basis is that the sound is very similar, and unless and until further exploration is done, we'll say that this Phammachak might originally have been a Sanskrit word, Brahmachakra, but nothing more could be explored till now, and we don't find anything which could bring the background of this term Brahmachakra. So this Phammachak is a mind-born son of Lord Brahma himself, and he is born through a mango motif when his mother serves mangoes to Lord Brahma. And interestingly, this episode is also found in several other versions of native Ramayanas found in Southeast Asia. So, as we know, the religious context of Ravan in Valmiki Ramayana, who is the Rakshasa and eats everything, but he also worships Lord Shiva, Lord Brahma. We won't go into deep about this. So Phammachak is depicted as a Buddhist by birth. However, he is epitome of an anti-hero in this Chinese Ramayana. So something very interesting about Chinese Ramayana, that Ramayana starts with the story of Phammachak. That is, it starts with the story of Ravana. So Ramayana basically, the Chinese Ramayana is basically Ravan-centric.
because they have borrowed Ramayana as a vehicle to spread their lands and hero, how not to be hero in a Buddhist society. Ravana is regularly called as Shri Ravan. He is called Chau Phamma Chak, which means Shri Ravan, which basically reflects a mix of both fear and awe. One interesting episode, this Phamma Chak molests Sita, who is named Sheila in Chinese Ramayana, in her previous birth. This episode might feel strange, however, we have a similar episode even in Valmiki Ramayana when Sita ji in her previous birth is Vedvati and she is molested by Ravana. So we find this similar episode. This Chinese Ravan Phamma Chak also participates during Swamvara and he is unable to lift the bow. One interesting episode which is not present in Valmiki Ramayana but is present in Chinese Ramayana as well as in Krittivasi Ramayana of Bengal. The episode of Vayal. Vayal is son of Ravan. And from Rama's camp, he abducts Rama and Lakshmana when they are sleeping. And similar episode is narrated in Krittivas Ramayana, and Mahiravan does the same act. So one interesting comparison we have found over here and similarity. It means that several episodes in Chinese Ramayana which are not present in Valmiki Ramayana, they might be present in other versions of Ramayanas which are present in India. And I have also tried to find the context of Chinese culture in Chinese Ramayana. Although Chinese Ramayana is basically of an ethnic minority, the Thai people, but they do share some cultural similarities with the majority Han people. And one of the concept is miensa in English, which we can translate as face or face saving. So during the final battle of Ram and Ravan in Chinese Ramayana, when Ravan comes to know that his end is near, he asks Rama for forgiveness. Rama tells him that I would forgive you even now if you apologize publicly. And Ravan says that I would apologize, but in person. I cannot apologize publicly. I would apologize to you without the presence of anyone else. So here in Chinese Ramayana, we see that Ravana is a very cunning person who is even willing to apologize when the death is looming large on him. But again, he also wishes to save his face, his miensa, which is a very Chinese concept. Irfan, So if because we have one more presentation. Sure. Ji. Just one Yeah, one in slide. 1 minute, please, if Yeah, you can. yeah.
So the last, this is the last slide, that in Chinese Ramayana, and that also is true for several other Southeast Asian Ramayans, that once Ravana is killed, Ravana is defeated, Ram Rajya is established, still the battle scenes are never over. And when Ravana is dead, Ravana's soul comes to disturb Ram Rajya as well as Rama's family. The same happens in this, that one fine morning, Sita ji creates a clay figurine of Ravana on request of the palace maidens who are very curious how Ravana used to look. And then Ramji gets some misgivings after seeing that clay figurine of Ravana, and she is banished. Of course, we don't find this episode in Valmiki Ramayana. So, this was my talk about Chinese Ramayana, especially focusing on Thamma Chak, Brahmachakra, the Chinese Ravan, and thanks a lot for listening me. Thank you, Professor Irfan, for enlightening all of us. I think about the Chinese Ramayana. We know different versions of Ramayana in India, in different parts, different languages over a period of time. But I think for many of us, Chinese Ramayana is a quite a good insight, and how you compare the Chinese Ramayana with our original Ramayana, Valmiki Ramayana. It's a very interesting input to this conference. Thank you very much. Any question to Thank you, Professor Irfan? Yeah, I had one question. Ji, please. Sir, I have also. Yeah, please Namaste, go ahead. Irfan ji. Your I can presentation. request Irfan ji, if you can close your. Sure, sir. Yeah, sure, sir. Yeah. Irfan ji, your presentation was very good, and a different angle we got it. Thank you very much. And now it is we study that Ramayana has happened in Treta Yuga, and over here it has been mentioned that Raman was considered as a Buddhist. Yeah. Okay. So is it so that as per Chinese, Ramayana has happened after Buddha has come? So when Ramayana has happened as per Chinese? See, basically, yeah, of course, that is very natural. That's very natural that they feel that after arrival of Buddha, Ramayana came. And this feeling is not only in Chinese Ramayana. In fact, this feeling is also in everywhere in Southeast Asia. When we visit Thailand and we say that we talk about Ramayana, they say that Ramayana is our own scripture. They would, any layman, not a scholarly person, any layman will say that no, Ramayana is not from India. Ramayana is from Thailand. Rama is from Thailand. Everywhere in Southeast Asia, when we visit Thailand and we say that we talk about Ramayana. No, it's a same repetition which is happening. No problem. Okay, I think we can now go to the last presentation. सर इसके बारे में मैं एक सेंटेंस कह सकती हूँ क्या? जी प्लीज प्लीज मैडम। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया में ये रामायण है, तो रामायण तो एंशियंट है, पर वहाँ पे जो हिस्ट्री जो उन्होंने लिखनी शुरू करी है, वो उनके हिस्टोरियंस ने बुद्धिस्ट टाइम से लिखी है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो थाईलैंड में हो। तो इसलिए उन्होंने उन सब कैरेक्टर्स को बुद्धिस्ट के रूप में पहले दिखाया है। तो क्योंकि जो उनका क्रॉनिकल जो उन्होंने बनाया है, वो 2500 साल पहले ही लिखना शुरू करा है। दैट इज व्हाई देयर इज दिस कंफ्यूजन। बिल्कुल मैम, बेसिकली वो जो उन्होंने लिखना शुरू किया है लगभग 6ठी सदी से ईसा के बाद 6ठी सदी से हम लोग पाते हैं एविडेंस रामायण वहां पहुंचा है। और जो है मैंने पहले भी बताया था कि एक
वाहन के रूप में प्रयोग किया गया है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। Abhi, we have stopped this discussion because we are only left with 11 minutes in this session, and we have one more presentation left. And I request our presenter, Dhruv. I will be sharing your screen, Dhruv. Okay, sir. So hope the PPT is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, namaste to all. Jai Shri Ram. This is Dhruv Parikshit, and my topic is Vanaras of Valmiki Ramayana. They were human or human? पिछले कई सालों से एक डिस्कशन चलता आता ही है सोसाइटी में कई बार, जिसमें वानर क्या थे एक्चुअली, इसको लेकर बहुत डिस्कशन होता है एंड इसका कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं होता। तो मैंने ट्राई किया है कि वाल्मीकि रामायण के ही एविडेंसेस दिखाकर मैं कुछ ऐसा प्रेजेंट कर सकूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि वानर एक्चुअली थे क्या। तो मैंने फ्रंट पेज पर ही साइड में एआई के थ्रू अपनी इमेजिनेशन को क्रिएट करने का ट्राई किया है। उसमें देर इज अ ट्राइबल मैन हु इज वियरिंग अ मास्क विच इज काइंड ऑफ टोटेमिक. Totem means a symbol which is associated with animals, and tribal people use it to worship it, kind of. And my first page is Maharishi Valmiki is regarded as Adi Kavi, and his work, the Ramayana, is considered as Adi Kavya. तो आदि काव्य के कुछ कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे उनको डिस्कस करने का ट्राई किया है। लाइक इन बालकांड चैप्टर 4 श्लोक नंबर 21, द वर्ड देयर इज आश्चर्यमिदम आख्यानम, लाइक रामायण इज नोन एज आख्यान with a small attribute आश्चर्यमिदम. इट मीन्स इस आख्यान में बहुत आश्चर्य से भरी हुई चीजें होंगी. And in the same passage, or we can say in the next slok, there is a word Vichitra Arth Padam. Like this, Valmiki Ramayana contains a lot of padas which have Vichitra Arth. Like there is no single meaning to it. There may be multiple meanings. So this is poetic literacy which Valmiki ji has attributed his Ramayana with. So please, next slide चला दीजिए. एंड उसका मैंने एग्जांपल देने का ट्राई किया यहाँ पे. लाइक दिस इज फ्रॉम किष्किंधा कांड चैप्टर नंबर 64. लाइक दिस इज द वेरी लास्ट चैप्टर फ्रॉम किष्किंधा कांड. यहाँ पे प्लवर और प्लवन शब्द का यूज हुआ है. प्लवर इज यूजुअली यूज फॉर मंकीज एज वेल. यहाँ पे हनुमान जी के लिए यूज हुआ है. एंड फ्लवर का एक मीनिंग बोट भी होता है. सिमिलरली फ्लवर का एक मीनिंग जंप भी होता है. तो मैंने जो लास्ट स्लाइड में बताया कि विचित्र अर्थ पदम एंड आश्चर्यमिदम अर्थम, इस तरीके से जो वर्ड्स आते हैं, यहाँ पे मैंने उनका एग्जांपल देने का ट्राई किया है कि प्लवर का मीनिंग हनुमान जी के लिए जंपिंग के लिए भी हुआ है, लीपिंग के लिए भी हुआ है, स्विमिंग के लिए भी हुआ है. लाइक इन वाल्मीकि रामायण plover shabd is also used for boat as well. Like some Vanaras were, when they were finding Sita ji, they made a boat and they were just roaming around the globe. तो ये एक ऐसा वर्ड भी आता है वहाँ पे जो प्लवर से ही डिनोट किया गया है. तो दिस इज हाउ वाल्मीकि जी इज एक्चुअली मेकिंग अप हिज पोएटिक डिवाइसेस. सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. यहाँ पे तैतीसीय प्रति शाक्य करके कुछ टेक्स्ट हैं, उनमें सूत्र मिलते हैं. तो वहां पर वाल्मीकि जी को एक बहुत प्रोमिनेंट व्याकरण और पोएटिक या फिर संस्कृत ग्रामर का स्कॉलर बताया गया है. तो दिस शोज कि वाल्मीकि जी कैन प्ले विद हिज वर्ड्स टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग विद अ सिंगल वर्ड्स. सो यहाँ से मैंने वो थोड़ा सा इंटरप्रेट करने का ट्राई किया है. सो सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. This is actually from my Instagram post. I also post these things on my Instagram. So मैंने यहाँ पे ये बताने का ट्राई किया है कि वानरा की कैपिटल सिटीज भी थी. तो ये किष्किंधा कांड चैप्टर नंबर 26 एंड 34 में से है, जहाँ पर किष्किंधा के एट्रीब्यूट्स को बताया गया है. एंड ये क्रिटिकल एडिशन से मैंने रेफरेंसेस लिए हैं यहाँ पे. तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. एंड देयर वाज अ श्लोक जहाँ पे जन एंड नर
इस टाइप के वर्ड्स यूज हुए हैं वानरों के लिए. सो दे आर नॉट ऑलवेज कॉल्ड लाइक मंकीज एंड ऑल. उनके लिए जन, नर, इस टाइप के वर्ड्स भी यूज हुए हैं. लाइक आर्य, आर्य वर्ड भी यूज हुआ है उनके लिए. एंड वानरा यूज टू हैव स्ट्रॉन्ग हाउसेस. तो यहाँ पे मैंने उसके एविडेंसेस दिए हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 33 ऑफ ये किष्किंधा कांड. Here we can clearly see the shloka. It also contains house of Hanumanji. In most of popular adaptations, we never see houses of different Vanaras, but Valmiki Ramayana clearly mentions कि हनुमान जी का भी अपना एक प्लेस ऑफ लिविंग था. तो उनका भी मल्टी स्टोरी हाउस था. इस तरीके से हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है. एंड सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन की भी बात आती है. सम वानरास वर म्यूजिशियंस एज वेल. तो वो बहुत कल्चर्ड लोग ही रहे थे. तो ये है. एंड द टॉपिक कम्स, सम वानरास वर बोर्न टू डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज और ट्राइब्स. तो बाल कांड का चैप्टर नंबर 17 जो है, उसमें कुछ वानरों को महर्षि से जन्मा बताया है, कुछ को ऋष से जन्मा बताया है, कुछ को नागों से जन्मा बताया है, कुछ को सर्पों से जन्मा बताया है. तो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज से डिफरेंट स्पीशीज नहीं बन सकती. लाइक अ बियर एंड द स्नेक कैन नॉट गिव बर्थ टू अ मंकी. इट इज बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल. तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा इंटरप्रेट करने का ट्राई किया कि दीज वर डिफरेंट ट्राइब्स विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. ऑल वर अंडर आर वैदिक पैंथियन ओनली, but they had their own regional and cultural roots. Like we even see today in South India, there are different subcultures. In North, we share different subcultures. In Kashmir side, there are different subcultures. So this is what I'm trying to interpret here. And लाइक यहाँ पे एक श्लोक आता है, मारीची मारीची पुत्रम. इन द श्लोक मैंने ये इंटरप्रेट किया है कि वानर जो थे वो डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज एंड ट्राइब से ही पैदा हुए थे. इधर अर्चिष्मान और मरीचि, ये दो लोगों की बात हो रही है. अर्चिष्मान इज वानर एंड मरीचि इज अ ऋषि. अर्चिष्मान is born to Marichi. So this is also another link कि वानरास were sons of human only. And तो यहाँ पे मैंने स्लाइड में एक बेसिक क्वेश्चन लगाया है, क्या बियर एंड स्नेक से मंकीज पैदा हो सकते हैं? तो डेफिनेटली नो. तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे ऊपर श्लोक भी आता है कि कुछ वानर सर्प सोसाइटी से बिलोंग करते थे. तो ऋग्वेद में ये 10th बुक जो है ऋग्वेद का, उसमें जो कुछ मंत्र आते हैं, तो उसमें अर्बुद काद्रव्य सर्प की बात आती है, जो मंत्र दृष्टा थे, जिन्होंने मंत्रों को देखा. लाइक इन आर ट्रेडिशन, मंत्र दृष्टा का कॉन्सेप्ट है, उसमें मंत्र लिखे नहीं जाते, मंत्रों का दर्शन किया जाता है. तो यहाँ पे मंत्र दर्शन किया है अर्बुद काद्रव्य ने. तो काद्रव्य का मतलब है कद्रु के लीनिएज. एंड इवन इन आर पुराणास कद्रु को सर्पों की माता कहा गया है. तो कोई स्नेक मंत्रों का दर्शन नहीं कर सकते. तो माय बेसिक लॉजिक हियर इज he was also a human, not a snake, exactly a snake. And even in Shatpat Brahman, it also says कि अर्बुद जो थे, basically he had learned विद्या ऑफ स्नेक. वहां पे सर्प विद्य करके बोला गया है उनको शतपथ ब्राह्मण में. तो वहां पे सर्प विद्या की बात हो रही है. इट मीन्स सम सोसाइटीज विच वर वेल वर्स्ड इन नॉलेज ऑफ स्नेक्स. मे बी इट कुड बी वेनम और पॉइजन. मे बी उनको उन सबका नॉलेज होगा. दैट इज वाई दे बिलोंग, दे कॉल्ड देमसेल्फ नागाज और सर्पाज. एंड इन महाभारत, Gita plus Mahabharat, I forgot to mention here the exact पर्व. इट इज फ्रॉम आदि पर्व एक्चुअली. यहाँ पे भी अर्जुन को किसी नागराज ऐरावत से कंपेयर किया गया. यूजुअली वी थिंक ऐरावत इज ओनली द नेम ऑफ इंद्राज एलिफेंट, बट हियर इट इज ऑल्सो मेंशन कि नागराज ऐरावत. तो यहाँ पे भी अर्जुन को किसी स्नेक से कंपेयर नहीं किया जाएगा ऑब्वियसली. तो दिस ऑल्सो शोज कि नाग करके भी कोई ट्राइब रहे होंगे. अच्छा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. यहाँ पे मैंने वो शतपथ ब्राह्मण के एविडेंसेस लगा दिए थे. तो या दे आर जस्ट रिपीटिंग. एंड हाँ, वानरास बिहेवियर व्हेन कुंभकर्ण एंटर्स द बैटल ग्राउंड. तो यहाँ पे अंगद जो हैं वो वानरों को देख कर एक बात बोलते हैं, फॉरगेटिंग योर ओन स्ट्रेंथ एंड नोबल लीनिएज,
where are you all running in fear like ordinary vanaras? अंगद क्लियरली कहते हैं कि आप लोग ऑर्डिनरी वानरों की तरह कैसे भाग रहे हो, क्योंकि ऑर्डिनरी बंदर डर के भाग जाते हैं. सो अंगद इज एक्चुअली calling them ordinary monkey because of their fear. Otherwise, they were human only. So that's Angad is saying here. So please next slide कर दीजिए. Women were human. There is no reference to any woman who is called complete monkey with tail in Valmiki Ramayana, even in popular adaptations. स्त्रियों को हमेशा ही नॉर्मल ह्यूमन दिखाया जाता है, बट वानरों को एक टेल वाला ह्यूमन दिखाया जाता है, टेल एंड मंकी फेस स्ट्रक्चर वाला. In this shloka from Kishkinda Gand, chapter number 33, when Lakshman enters Kishkinda to remind Sugriv that the 4 months of rainy season has finished, so वहाँ पे तारा जो है, जो बाली की वाइफ थी, वो थोड़ा सा अपना ड्रिंक करते हुए, थोड़ा पार्टी करते हुए ये लक्ष्मण के सामने आते हैं. तो शी माइट बी नॉट वियरिंग एवरीथिंग ऑन हर बॉडी. सो लक्ष्मण की जो साइट्स हैं, जो उनकी आंखें हैं, वो नीचे हो जाती हैं. ही जस्ट वो बस उनकी तरफ देखते नहीं है बिकॉज ऑफ शाइनेस. सो दिस ऑल्सो शोज कि दे वर नॉट कंप्लीट डिफरेंट स्पीशीज, दे वर ह्यूमन ओनली. सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. एंड इन द सेम वे जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आता है कि रावण के साथ 100 ऑफ स्त्रियां थी. तो हनुमान जी वहां पर भी उनको देखकर अपनी आंखें मोड़ लेते हैं. सो दिस ऑल्सो शोज कि दे वर ऑल ह्यूमन बीइंग. डिफरेंट स्पीशीज कभी इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो. डिफरेंट स्पीशीज कभी इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते. दे वर ऑल ह्यूमन, दैट इज व्हाई दे वर फीलिंग सच शाइनेस. सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर. ओके ओके सर प्लीज पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए. भारत मीट्स हनुमान. जब हनुमान जी लास्ट में उनसे मिलते हैं, भरत जी से, जब राम रावण युद्ध समाप्त हो जाता है, तो वहां पर भरत जो है वो बहुत खुश होते हैं और हनुमान जी को कुछ गिफ्ट्स देते हैं. उनमें वो कई सारे गांव देते हैं, कई सारी काउस गिफ्ट करते हैं, एंड उनको 16 वेल कल्चर्ड मेडन्स, मतलब कन्याएं थी, वो गिफ्ट करते हैं. क्योंकि उस समय इस टाइप की चीजें थी कि कुमारी कन्याएं गिफ्ट करिए या फिर उनको एज दासियां दी गई. सो दिस ऑल्सो फाइंड्स इट्स प्लेस इन क्रिटिकल एडिशन एज वेल. तो अगर हनुमान जी को डिफरेंट स्पीशी होते तो उनको ये चीजें नहीं गिफ्ट करी जाती. और दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि उन्होंने उनको अपनी वाइफ की तरह एक्सेप्ट किया या नहीं किया, दैट इज अ होल डिफरेंट डिस्कशन. बट द थिंग इज भरत जी ने यहाँ पे उनको देने का गिफ्ट देने का ट्राई किया. एंड ऑल्सो जीनियोलॉजीज, वी फाइंड मैनी सरनेम्स टुडे जिनके साथ सरनेम नाग होता है, सिंह होता है, मोर, लेरो, पवार, मकर. ये सब एनिमल्स के नेम होते हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर एनिमल्स, बट their surnames are deriving from animals. Like very famous surname Singh. Singh is basically lion in Sanskrit. So this also shows कि आज भी हमारे देश में ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके सरनेम्स कहीं ना कहीं एनिमल्स से लिंक्ड हैं. They could be their totem of their ancestors. So that's what I am trying to portray here. So please next slide कर दीजिए. ध्रुव जी, समय थोड़ा सा अब हमारा ओके वो हो ओके रहा है ना. ओके सर, वो कितना टाइम बचा है प्लीज बता दीजिए एक बार. समय तो लगभग पूरा हो चुका है. अगर आप अगले 1 मिनट में अपना ओके कंक्लूजन की तरफ चले जाए. यहाँ पे लंका दहन का मैंने टॉपिक उठाया है. तो अब लोगों, अगर मैं वानरों को मनुष्य बोल रहा हूँ तो उनकी पूंछ का क्या. तो यहाँ पे रावण हनुमान जी की पूंछ को देखकर एक बात बोलता है, कपिनाम किल लांगोलम इष्टम भवति भूषणम. इसमें जो भूषण वर्ड है वो ऑर्नामेंट का मीनिंग, ऑर्नामेंट का एक तरीके से सिनोनियम है वो संस्कृत में, जैसे आभूषण कहते हैं. तो रावण कह रहा है, फॉर वानरास द टेल इज इंडीड अ बिलव्ड ऑर्नामेंट. तो बेसिकली रावण जो है वहां पे हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने को इसलिए कहता है जिससे उनका अपमान हो, उनके वानर कुल का अपमान हो, एंड उनको दर्द फील हो, क्योंकि ऑब्वियसली फायर के पास रह के दर्द ही फील होगा.
तो यहाँ पे मैंने उन्हीं चीजों को मेंशन करने का ट्राई किया है। तो सर इतना काफी है, अगर टाइम पूरा हो गया है, क्योंकि आगे सेम चीज को मैंने बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। बस मेरा ये था कि आप अपनी लास्ट स्लाइड पे चले जाए, अगर फाइनल मतलब ये सर आगे कंफ्यूजन के बारे में, अगर इफ यू कैन से कि ये क्यों क्रिएट हुआ कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन कई बार इसलिए भी क्रिएट होता है कि लोग ना जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, कई बार उनको जो जनमानस है या जो ऑर्डिनरी ह्यूमन होते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, नॉट एवरीवन वाज स्कॉलर इन प्रीवियस टाइम्स। लाइक आज मेरे पास इंटरनेट है, आज मेरे पास चैट जीपीटी है, आज आई कैन डिग डीप इनटू मैनी टॉपिक्स, बट इन प्रीवियस टाइम्स इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो कई बार फलश्रुतियां होती हैं, कई सॉरी फलश्रुति कह रहा हूँ, जो जनश्रुतियां होती हैं, कई बार सोसाइटी में यूं ही सर्कुलेट हो जाती हैं। तो कुछ का कुछ बन जाता है। एंड सो आई थिंक वानराज वर ह्यूमन ट्राइब्स ओनली, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब बातें आगे बढ़ती हैं तो उनमें विकार आ जाता है। एंड ये उसी विकार की वजह से आज हम वानरों को एक डिफरेंट रूप में देखते हैं, हम उनको एक ह्यूमनॉइड स्पीशी की तरह देखते हैं, जबकि हमको बायोलॉजिकली भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि एक टाइम पीरियड ऐसा रहा हो जहाँ पे ह्यूमनॉइड स्पीशी एग्जिस्ट करती हो, जिनके पूंछ रहे हों और वो वेल डेवलप्ड सोसाइटीज में रहे हों, क्योंकि रामायण की सोसाइटी बहुत डेवलप्ड सोसाइटी बताई गई है। एंड अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो इस टाइप की कोई भी हमको पुरानी स्पीशी नहीं मिलती जो एक डेवलप्ड सोसाइटी के टाइम पे एग्जिस्ट करते हो। या तो वो उनसे कई लाखों साल पहले एग्जिस्ट करते थे, तो कंटेम्पररी टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते थे उनके साथ। सो दिस इज माय कंक्लूजन कि वानर मनुष्य थे, दे वर नॉट ह्यूमनॉइड स्पीशीज और एनी काइंड ऑफ एनिमल। बहुत धन्यवाद थैंक यू। ध्रुव आपका। और आपने एक बहुत अच्छे विषय पर बड़ा गहन प्रकाश डाला, अलग अलग प्रकार से। एक ही विषय, उस विषय को एक ही प्रकार से समझाने की बजाय आपने उस विषय को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे आपने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लिए हों, चाहे आपने और लिटरेरी एस्पेक्ट्स लिए हों, दोनों ही तरीके से आपने उनको समझाया। सो थैंकफुल टू यू। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे किसी अटेंडी को ध्रुव से कोई सवाल है तो दे में आस्क द क्वेश्चन। ओके, आई थिंक। हेलो, और मैं एक सवाल था कि जी जी अंगद जी का भी जो एपिसोड है, जो वो रावण को मिलने जाते हैं फर्स्ट टाइम एज अ जी जी। दूत ऑफ श्री राम, तो तभी वो टेल अपनी बड़ी करके बैठते हैं रावण के सामने, आई एम एक नॉट सीट एबल टू बनाते सी हु इज हैं। आस्किंग। हेलो, जी जी जी, मेरा आवाज आ रही सवाल, है आपकी। हाँ, कि ओके ओके। जब तो अंगद जी जब बेसिकली जाते हैं रावण को मिलने और अपनी टेल की सीट बनाते हैं एंड इक्वलेंट टू रावण पे बैठते हैं रावण के सामने, तो वो टेल का क्या कहना है? एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में इसका मेंशन नहीं मिलता हमको। वाल्मीकि रामायण में क्या होता है, राम जी जो हैं वो भेजते हैं अंगद को, तो वहां पे रावण बहुत रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली हनुमान जी ने अभी आतंक मचा दिया वहां पे पूरा। तो अब वो अब सेकंड चांस नहीं ले सकते वो कि वापस वो चीज क्रिएट हो। तो अंगद को वहां पे बंदी बनाने की बात तो करते हैं वो, तो वहीं पे आसपास में गार्ड्स खड़े होते हैं, तो अंगद क्या करते हैं, ही जस्ट जंप्स फ्रॉम देयर एंड वो वहां पे पीछे कुछ बालकनी जैसा कुछ एरिया होता है, उसकी रेलिंग तोड़ के वो वहां से भाग जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पे डिस्क्रिप्शन आता है, वहां तेल का मेंशन नहीं होता। आई थिंक रामचरितमानस में है ये एपिसोड। रामचरितमानस में हो सकता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को ट्रेडिशनली इतिहास माना गया है, एंड रामचरितमानस उसका एक रिटेलिंग है। तो मैं यहाँ पे इतिहास वाले एस्पेक्ट को लेके चला। थैंक यू, थैंक यू वेरी ध्रुव, मच। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हेलो। जी सर। जी जी। तो ये जो है सप्तदश अध्याय बालकांड का जो है, आपने देखा होगा सप्तदश। तो जो जितने भी 12 यूथ थे वो किसी ना किसी देव के पुत्र थे। तो उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप बोलें कि ये हनुमान जो है या बाली है, इंद्र से हुए, हनुमान वायु से हुए, तो क्या ये जी इनकी जी। ऐसा हमको नहीं बताते कि ये अलग अलग क्लेम हुए? तो इस पे मैं मुझे चाहूंगा कि आपकी आवाज कभी ठीक आप। से नहीं। चौबे सर, आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है बीच में, कुछ बात। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ पा रही है सर। तो
है। नहीं, हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। चलिए आई थिंक मैं इनका क्वेश्चन समझ गया हूं। उनका क्वेश्चन ये है कि जो वानर होते हैं वो कई देवताओं के पुत्र बताए गए हैं, लाइक हनुमान जी वायु के पुत्र बताए हैं, और बाली इंद्र के, सुग्रीव सूर्य के। तो उसका भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया था पीपीटी में। इट्स जस्ट टाइम कम था तो इसलिए मैंने थोड़ा स्किप किया उसको। तो बालकांड चैप्टर नंबर 17 में जितने भी वानर हैं, इनके पिताओं के नाम आते हैं। इवन युद्ध कांड में भी इनका नाम रिपीट होता है, और 2 बार रिपीट होता है युद्ध कांड। तो बाल कांड में जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें ना इस तरीके के डिस्क्रिप्शन आते हैं कि जो वानर हैं उन्होंने अपने पिता के ही एट्रीब्यूट्स भी अपने अंदर लिए हैं। अब इसको हम वाल्मीकि जी की पोएटिक डिवाइस भी कह सकते हैं। लाइक मैंने पीपीटी के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि वाल्मीकि जी की राइटिंग ही इस तरीके से है कि वो बहुत ज्यादा लिखते कुछ हैं एंड उसका मीनिंग कुछ और भी निकल सकता है। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया, प्लवंग, प्लवगा, बोट के लिए भी होता है, जंप के लिए भी होता है, स्विम के लिए भी होता है, बंदरों के लिए भी यूज होता है। तो एक वर्ड डिफरेंट मीनिंग दे सकता है, तो कुछ सेट ऑफ श्लोक डिफरेंट मीनिंग दे सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि पुराने टाइम के जो इतिहास ग्रंथ रहे हैं उनमें हिस्ट्री एज इट इज नहीं लिखी जाती, उसको थोड़ा अलंकारों के साथ सजाया जाता है। तो वो मैं थोड़ा अलंकारिक मानता हूँ उसको, जिसका ओके, जैसा थैंक यू, गुण है थैंक यू, उसको उस ओके, तरीके से थैंक यू बनाए। ध्रुव, थैंक यू ध्रुव। ओके सर। एक एक और आपको सिर्फ एक विषय दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। आपने बीच में ये शब्द बोला था कि उस समय बहुत डिफिकल्ट था। आज हम चैट जीपीटी के जमाने में है, तो बला अति बला जैसी क्रियाएं जो थी, और जो हनुमान जी का समुद्र पार करना, या जो हमारे जो वाल्मीकि रामायण में देखते हैं सब चीजें, तो क्या इनको कभी भविष्य में, आप, ये प्रश्न नहीं है मेरा, कभी कोरिलेट करें तो बहुत। जी 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। So, with this presentation, I again request if our this speaker, Suman Kumar Sharma ji, is here, or I think not here. So, we were supposed to have a total 9 presentations in this particular session from 6 p.m. to 8 p.m. And out of 9, we could present 8. Sumanji is probably not available, so maybe some other engagements. And interestingly, from the Valmiki Ramayana, we got a very important perspective not only about Chinese Ramayana, the geographical aspects, historical aspects from the Ramayana, because Ramayana is in much detail, and you can get a lot of such insights from Ramayana. And then how a very interesting comparison of this Das Bhav of Lakshman, which is leading to that Guru Tattva. And then we also have that, because I personally feel that because of so much of media influence, cartoons, and other kind of caricatures which are there, all our younger generation feels that Hanumanji and Vanaras are some kind of monkeys. But we just discussed that how Dhruv very well explained multiply that it's not, they were also human, and they may belong to a different tribe. So people have worked on Ramayana from different aspects, and in this small 2 hours of scholarly presentations, all of us could be benefited. Some of us may be knowing some aspect, but there were many new things which we came to know, and this is the result of long researches of people like Sharad Kuberji, spending about 30-40 years in the research of Ramayana. तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि रामायण को महाकाव्य क्यों कहा जाता है, और महाकाव्य के क्या लक्षण होते हैं। उन्होंने उस चीज को हमारे सामने प्रस्तुत किया। सो रामायण को अलग अलग दृष्टिकोण से किया, और बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं आए, लेकिन जितने भी प्रश्न आए उनसे मुझे लगता है कि हमारा ज्ञानवर्धन और हुआ होगा। जैसे अगर किसी ने कहा कि फॉरेनर्स आते थे उस समय में, तो फॉरेनर्स कौन होते थे?
उस समय में, क्योंकि उस समय इस तरीके की कल्पना नहीं थी कि जैसे आज पूरा हमारा देश है, हम फॉरेनर मानते हैं कि कोई चाइना से आएगा और अमेरिका से आएगा। लेकिन उस समय चूंकि जनपद होते थे और दूसरे जनपद से कोई व्यक्ति आता है, दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति आता था, तो वही फॉरेनर हो जाता था। तो अलग अलग लोगों ने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दिए, थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हुआ और उनके उत्तर भी बहुत सधे हुए हमको प्राप्त हुए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसका सीधा अभिप्राय है कि लोगों ने केवल प्रश्न शोध पत्र ही नहीं प्रस्तुत किए, उनकी उस टॉपिक में बहुत अच्छी स्टडी की हुई है, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। यदि हमारा उस तरीके का शोध में अध्ययन नहीं है, तो शायद हम इतने अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मैं सभी जितने भी प्रेजेंटर्स हैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सबको इतना लाभान्वित किया। और सभी लोग जो हमारे रामायण परिवार के लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए, उन सबको भी निश्चित रूप से इस स्कॉलरली चर्चा का लाभ हुआ होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा सेशन वैसे रिकॉर्ड हुआ है, तो आपको कुछ समय में ये ऑनलाइन में भी उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। अभी सर, गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। जी। हम थोड़ा सा समय थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, पर इट वॉज वेल वर्थ इट। आई विल जस्ट टेक 5 minutes. First of all, I want to thank all of you for attending today's session. Very valuable session. I think I attended almost all of you, and one probably I missed that I'll watch on YouTube. तो जैसा अभी रजित जी ने बताया कि everything is being recorded here. And in due course of time, we will have YouTube's developed and posted on our channel. It is taking time because there's lots of papers and lots of presentations, and it's a time-consuming process. सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। 9 में से 8 यानी 90% आपका स्कोर रहा। रजत जी, बहुत 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 बधाई है आपको। IIT में एडमिशन दे दिया जाता है, क्योंकि 90% तो हमारे कभी आए नहीं। हमारे तो 40% आया करते थे, तो बड़ी मुश्किल से धक्का मार के अगली क्लास में भेजा जाता था। सो वेरी वेरी गुड अटेंडेंस, सो वंडरफुल। मैं एक दो बात और कह दूं। वाल्मीकि रामायण का it's one of those texts which is kind of ignored, except for this particular group. You know, most of us have not read Valmiki Ramayana. I have not read, and we've tried to think about it कि क्या ऐसी क्या बात है, इतना महान ग्रंथ है और हमने इसको इग्नोर कर दिया। Or and there are two major reasons which I think are: one is in Sanskrit. Most of us don't know Sanskrit, and then we are just baffled. Oh my God, what it is! And second, it's a large text, 24,000 plus shloks. So some of us worked on, thought about it, कि क्या किया जाए कि it becomes accessible to masses and get motivated to read it. So a group of us are working on developing a condensed version of Valmiki Ramayana. Condensed version doesn't mean we are tampering with it. It's going to be out of 24,000 verses, we are selecting about 2,000 verses. And that selection process is a very complex process. At some point in time, I will talk about that. The selection process has been done, more or less. It's never done until it's done, as you know. So, and then of the verses we are selecting, like 2,000 some verses, we are writing their very simple Hindi translation in a very simple language. But even Gita Press translation is a very complicated translation. So in due course of time, we will have that with Ramji's mercy available for all of you to read. Our goal was to have it ready till at the time when we had the last Valmiki Jayanti. We couldn't meet that goal, and now we will certainly definitely have it ready before next Valmiki Jayanti, probably even sooner than that. तो ये मैं आपको जरा बता रहा था इस बारे में। अब करीब it is 8:18 in India, I think, और 9 बजे we will start our regular Thursday Ramcharitmanas diploma course class, and today we are going to start Aranyakand. We have finished Balkand, समाप्त हो चुका है, Udayakand समाप्त हो चुका है,
वो फॉर्मल डिप्लोमा कोर्स है, दोज ऑफ रजिस्टर्ड दे कम टू क्लास एवरी थर्सडे। उसका एक क्विज होता है हर वीक, एक एग्ज़ाम होता है हर कांड के बाद में, और बाद में एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। सो हमारे यहाँ कई ऐसे उसमें विद्यार्थी हैं जो 80 से ज़्यादा उनकी उम्र है, एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। इट्स टू लेट टू गेट एडमिशन इन दैट, क्योंकि आधा कोर्स समाप्त हो चुका। पर इफ यू लाइक टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, I will send you a link as soon as we are done. Please join that. Tomorrow we will have two sessions. One will be, first session will be on management lessons from Ramayana, and that will be there are 8 papers in that, and then there will be second session on Ram Rajya. There will be five papers on that. Tomorrow we'll start at 6:30 p.m., not at 6 p.m. So we realize now that some of you are working. It's kind of hard to get to this at 6 p.m. Those are people like me who are have nothing else to do. Then that's okay. But जो काम पर जो जॉब पे जा रहे हैं, घर पे आएंगे 6 बजे का सेशन बहुत मुश्किल टफ हो जाता है। और चूंकि सर्दी है इसलिए हम बहुत डिले भी नहीं कर सकते। डोंट वांट टू डू इट टू लेट, इट्स सो कोल्ड इन इंडिया। So tomorrow we'll start 6:30 and probably we'll do another days. मेरे लिए कोई प्रश्न आपका? नमस्ते सर, नेक्स्ट बैच नमस्ते। कभी स्टार्ट होगा? नेक्स्ट बैच ऑफ नेक्स्ट बैच अभी तो ये तो मैं राम जी जाने, अभी मन ये है कि ये मेरा मन ये है, अभी जो हमारी टीम से बात करेंगे कि अभी ये मेरे ख्याल से अप्रैल तक चलेगा कि वी आर डन अबाउट हाफ वे। उसके बाद में अभी गीता का कोर्स शुरू करने का भी मन है। एक सेशन हम कर चुके हैं भगवद गीता का, जो आप में से कई लोगों ने अटेंड किया हुआ है, और एक वाल्मीकि रामायण पर कोर्स शुरू करने का मन है। और अब इन इन सब ग्रंथों के बीच में कंपटीशन है कि वाल्मीकि रामायण का कोर्स शुरू करें, हम तुलसी रामचरित मानस का शुरू करें, गीता का कोर्स शुरू करें। And it's very and so with so much interest, it's kind of amazing when we thought about doing these things and several years ago, not several, few years ago. तो बड़ा लगता था कि ऐसे कोर्स, अब गीता का रामायण का कोर्स ठीक है, प्रवचन होता है, लोग आते हैं, स्वामी जी प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े 3-3 घंटे का प्रवचन, एंड एवरीबडी एंजॉयज, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बट देयर नो लर्निंग मोस्ट ऑफ द टाइम। वी एंजॉय, ताली बजाते हैं, आके घर पे कहते हैं स्वामी जी ने बहुत अच्छा बोला। उनसे कहिए 10 मिनट आप बताइए स्वामी जी ने क्या बोला, तो भगवान जाने स्वामी जी ने क्या बोला। तो हियर द फोकस इज वेरी डिफरेंट। हियर को फोकस बिकॉज you attend the class and they immediately there's a quiz. Unless you study, you can't do anything in quiz. You don't do the quiz, you don't get certificate. So आप समझ रहे हैं साहब, our goal is different. So let's say आगे परंतु जो कि, और there is a title like diploma and all that, वो एक तरह से बच्चों को ललचाते ना कि तुमको लॉलीपॉप मिलेगा, इस तरह से। अल्टीमेट गोल इज इन ग्रंथों को पढ़ना, समझना, जानना। मैं देख रहा हूँ आज, देखिए ना, ये इतने यंग यंग बच्चे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया इन्होंने बातें की हैं। अभी जो लास्ट में थे स्पीकर में, मैं बुढ़ापे में मुझे नाम याद नहीं रहते। हमें देख अमेजिंग, कितनी जबरदस्त ध्रुव 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 कितना, आई मीन हाउ डेप्थ इज इन दिस रिसर्च. So later on, I will ask them to if they can share their PPT or something. तो क्योंकि इनको समझने के लिए बहुत समय चाहिए, ये 10 मिनट में नहीं होता काम। आप लोगों को ना 10 मिनट, जो जो काम प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए, उसके लिए आपको 10 मिनट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है। बट व्हाट कैन वी डू? But these have to be listened again and again to really get a feel for that. Any other question? सर, रजत सर से एक प्रश्न था, पूछ सकता हूँ? जी जी, आप पूछिए। रजत सर, हमारी फोटो नहीं आई अभी तक। सर उसका जो उत्तर है वो थोड़ा सा कठिन हो गया है, क्योंकि जो डे 2 की जो फाइल्स थी उनका मीडिया करप्ट हो गया है। तो डे 2 जो हरिद्वार की यात्रा हुई थी और उसमें जो सब फोटो खींचे गए थे, वो मतलब भगवान जी चाहते हैं कि आप दोबारा आए और तब आपके फोटो खींचे, तब आपको मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए कोई बात। ये बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा अभी फिर अगले 37 मिनट में हमारा रामायण क्लास शुरू होना है। उसका लिंक मैं इस ग्रुप में डालता हूँ, और आप उसमें अवश्य पधारें और उसका आनंद लें। और फिर कल सुबह
सुबह मेरा तो मेरा तो सुबह टाइम होगा, आपके यहाँ 7:30 के 6:30 बजे। फिर कल पुणे मिलते हैं और मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण और रामराज पर बात करते हैं। ठीक है। जय श्री राम। बहुत बहुत जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।